ये चालू करके गए अपन। हम लोग डेथ मैच में क्या है हम लोग ये कर रहे थे। मेरे को तो अभी मतलब वो खेलने का मन ही नहीं करता है। नहीं जमता है रखलो नहीं है मेरा। मतलब थोड़ा ये हो रहा है। नहीं है मेरा। इस बंदे ने क्या किया पता है क्या मेरे पे? यार वैंडल का पूरा स्प्रे खाली किया मेरे पे। हाँ। बाद में एक भी नहीं लगा क्या? एक भी नहीं लगा और नाइफ लेके मेरे सामने आ रहा है। They are so dead. नहीं भाई नहीं। मोस्टली ऑफ करता है तभी मैं टू फिंगर करता है शायद, लग रहा है मेरे को। अभी मैं चेंबर का अल्टर निकाला तो टू फिंगर पे आ गया वापस। चेम्बर क्या ऑफ करने का टाइम ऑफ करते टाइम टू फिंगर आता है मैं शायद। हाँ। नहीं करना चाहिए। ऑफ करते वक्त मैं टू फिंगर कर रहा है, अच्छा बाकी टाइम तो ठीक है मेरा। देव तो पंडू रंग आ गया।
ओ भाई कुछ नहीं आया बोलता साला। क्या है? ग्रेविटेशनल का स्पेक्टर, आरजेक्स का फैंटम, सब बेकार है बोल रहा है। उसको नहीं चाहिए, समझ गया। ऐसा बोलेगा ना फिर नहीं चाहिए, बोलते सब बेकार है करके। उसको क्या चाहिए, क्लासिक चाहिए। तो पंच साहब बहुत टोटा है लगता है। वाह। ओ चलो ओके है। मैं भी ले लूं क्या? ले लो ले लो, व्हाट टू टेक फ्लैश वाला ले लो कुछ। रेना ले लो चाहिए तो। हाँ ये भी चलेगा। बड़े लोग आ जाते सुबह सुबह। Morons. बीच में आवाज क्या आता है तेरा? ओ ये मोबाइल का रिंगटोन है क्या? Kenny, yeah. I've stood over so many corpses. बता रही है कि A few more does not. वॉशरूम जाके आया है। हो जाएगा अपना कॉपी। हम पे अपन 2 मैच खेल लेंगे। उसका 15 मिनट इतना रहता तो। Go go go! अरे बाबा कैसे हो? बढ़िया, तू कैसा है? अरे 50-50 हूँ मैं तो। 50 ठीक हूँ, 50 बुरा हूँ। गे क्या? अबे यार गे क्या? कंट्रोल भी चेंज कर दिया। अबे साले अगर मैं गे हूँ तो तू कैसे पैदा हो गया? एक मिनट रुक जा जरा। रिगार्ड मारते हैं। वॉइस चैट किधर की बैंड? है इसने? किधर गायब कर दिया इसने? Gotta go! Spike down A. Go go go! Spike spotted A. ड्रॉप। Turn here. For here. स्पॉन से आर्केड से। गाइस एक अब स्पॉन भाई, स्पाइक कैंप करो ना। स्पाइक कैंप करो, इधर क्या कर रहे हो? माँ की हैंड पे स्पाइक पड़ी है। हद है भाई, कहाँ घूम रहे हो? हाँ भाई ऐसे ही हार जाओ यार, थ्रो कर लो। Enemy एक सैंड है। अबे दोनों छुपे रहे, छुपे रहे। One नियॉन enemy remaining. नाइस। पीक करना ही क्यों है? पीक करना ही क्यों? लौड़े उनको आने देना झाटू। Their jet is की पॉइंट क्या किया इसने? किधर दिख रहा क्यों नहीं की पॉइंट इसका? पार्टी है किधर है? reloading. मेरे साथ रह तू। मेरा ये गया तो मैं रहना। Gotta go! किधर हो? हाँ किधर हो? No prisoners. भी जाते आजा। I'm out of मैं here. गया था मेरा गन लेना। वैसा। Go go go! Good work. ओ भाई Smart move. Watch out! Enemy spotted. ऊपर अंदर में लगा। Spike down A.
मेरे नीचे एक, One enemy क्या बात remaining. कर मेरे नीचे लास्ट। Found you. Gotta go. Spike spotted A. Keep it up. Screw up and they're on us. अब अरे ले उनका साइफर रेप के था। I'm out of here. रीमेक करने बोल रहे Go, go, go. अबे 2.5 राउंड हो I'm गए, out of इनमें here. कैसे होगा? वैसे नहीं बता रहा हूँ सरेंडर फोर वी करने फाइव है। बोल उसको, बोल उनको। सरे वा काम तू बोल करना। बहन जो। नहीं तू तू बोल। बोल लौड़े उनको तू आने बोल, का तू क्या बोल। पूछ साढ़े, उसको। तू बोल। आड़े I'll show साड़े them. क्या बोल रहा है Live साड़े। Thankyou. वो सिलेंडर निकाल के कृपया बात करिए। नहीं तेरी माँ का मुंह में। हाँ वहाँ पे क्यों जा रहा है? मैं तेरे को बोल रहा है ना, Gotta go. मेरी जगह फिर तो रो देगा। सॉरी भाई, सॉरी। There. Gotta go. There. Here, there. एक इन रहेगा। भिंडी साइड इतना फ्री दे देते हैं इन लोग। Got him. Coming through. अबे कवर दे दो यार, हद है भाई। Spike अबे तू planted. ओपन में व्हाट द हेल। अरे यार ओपन में नहीं, एक अपने स्पॉन पे है। स्पॉन पे हाँ, रहना, पता है। स्पॉन पे अपने। Last पता है player मुझे। standing. एक ड्रॉप है, एक स्पॉन है। वाह भाई, शीश भाई। अरे भाई तेरे को क्या हुआ? Just Yeah, let yeah, them come here. try to catch me. मेरा ले ले। Go, go, go. तुम लोग ये इतना फ्री दे रहे क्यों है भाई? होल्ड करो, ये वॉल कर एक जगह। इतना फुकट मिल रहा है ना उनको, ये आओ ले आओ, चले जाओ प्लान करके ऐसा है। बॉडी से लोग की वजह से ऐसा हो गया सब। इधर ही आ, इधर ही आ। दो फ्लैशर। पीछे खेल रहा है क्या उन लोग? Here we go. Spike down B. वाओ क्या रन एंड गन किया। ए डिस्कनेक्ट किया हो जाओ। 130 और उनका ये ओवन। ले भाई 130 वाला मार रहा है सबको। Last player standing. 130 वाले का एस है। यूरो स्पाइक क्या है आपके बाजू में? पता है मेरे को। उसको पता है शायद आप इधर। My ult went. फ्लैश करो, ऑफ करो। Spike planted. लो हो नहीं। They don't have a single बैठने लग रहा है। Go, go, go. I'm out of here. Go, go, go. I need healing. रिपोर्ट Gotta दिस go. प्लेयर AFK। भूसड़ी वाले ने क्या रन एंड गन किया। सैंड घुस गया। स्पॉन Here. ना स्पॉन। हाँ स्पॉन जेट है। शोध। वो सीधा डैश मार के गया उधर। नाइस। सेज मारा अपना। Enemy spotted A. Enemy One enemy remaining. ओ ये तो इधर था शायद। there. देखता। Take this. Cutting their vision. नहीं इधर Enemy spotted A. Thrifty. हो भाई। Go, go. Keep your weapons. Spike spotted A. स्टैनो के गपचुप खड़ा था मतलब। Reloading. फ्लैश भी हुआ था वो। Dance? सेज ऑफ दे। साला मैं किल करो, गन उठा लिया सब उसने एक एक करके। ले भाई Here. ऑफ देना। तू गया बेटा तो ऑफ दे के गांड मारा ना तू। अच्छी लोगे वे। गोटा मुंह में ले मेरे।
हटा देगा कुछ कर रहा है तेरी गाड़ी में देगा। पहले मैं वैंडल उठाया और वैंडल उठा लिया, ऑफ दिखा उसको ऑफ उठा लिया। Take this. स्मोक के अंदर रहेगा, Gotta go. स्मोक के अंदर। लाउड है, समझता नहीं क्या? ले ये मिल गया हमको। ओ भाई साइफर 40। Spike planted. अरे अंदर भाई, लेफ्ट में था, तेरे को किधर चूते ने कहा अल्ट किया? I'm out of here. किधर है दोनों स्पाइक है क्या? अंदर है साइफर, अंदर है। Last player हाँ। standing. अरे साइफर नहीं था, सॉरी, जेट अंदर। Out of charges. साइफर ऊपर है, वॉल है तेरे पास। अटक गया वे, ये अटक गया मेरा। ए टू सेड Stay alive. कल खेले थे अपन इसका, Life, not yours. रेज ने ऑफ ले लिया। लंडे लोग आ जाते हैं। I'm out of here. उन्होंने ऑफ ली थी। For you, hermanita. बेस्टन आया, हो गया क्या लौड़े छाटू साला ऑफ कर रहा है चूतिया। व्हाट द फक, ये क्या स्मोक किया इसने? अबे वो अंदर ये मार रहे हैं। Nice try. Last player standing. ओ हाँ? 120 राउच की वजह से बच गया। सही अपने ऑप ना अपने गान उड़ा लिया मुंह से निकल के, ठीक है? तो भी तो शॉट आगेगा भेंचो आपका 14। वो देख भाई, सरेंडर कर देंगे मेरा पैसा वैसा जाएगा तो, सॉरी मेरा आ रहा जाएगा वैसा भी चलेगा मेरे को। अबे जीरो, ओ भाई कैंसिल भी कर दिया सीधा इसने। 0 किल पे बैठा है लोडू अब तक। I have extra money if anyone needs. Can I get a drop? Thanks. Go, go, go. Gotta go. मार्केट से कोई आया था क्या? Watch this. इसलिए तो नहीं आ रहे। Here. ए आए गया मैं, मेरे पे गया मैं। Jet's ground. और एक ले ली भाई, फ्लैश किया, चेक क्यों नहीं किया वो? Here. स्पाइक स्पाइन में, इधर स्पॉन में। उनके स्पाइन पे One enemy remaining. There. राइट है। जी गाइस, जी जेट का वॉइस चैट नहीं चल रहा। अल्ट करेगा शायद वो। उसको दोनों इधर नहीं पता, शायद दोनों पता चल के अल्ट कर देगा वो। अरे पीक ले भाई, सरेंडर करेंगे प्लीज। My city needs me. I Here. can't be away for long. Go, go, go. Cindy. दिया क्या वापस उसका? नहीं दे रहा है, लॉल। I'm out of here. है ना अंदर, इधर टीपी मारता है, इधर नहीं तो इधर। Who's next? अबे यार उधर
अंदर है. Here. I'm out of here. Here. There. बी मैंने Here. Watch out. Gotta go. Take this. Spotted A. हाँ और रन एंड गन Spike planted. फैंटम में मेरा Your duty is not. अब ए स्पॉन माँ की. लौड़े तू मत कर खुद से जान इंस्टॉल कर Player standing. अब ले लो अपन You're up. Stay safe. You're going back in. I'm out of here. Gotta go. तू सेज साला. छुट्टी से खेल रहे हैं Move. I'm out of here. Here we go. वाह भाई वॉल बैंक दे के चला गया मेरे को और वॉल बैंक रजिस्टर दिखा रहा भी नहीं है लोग के टाइम 4 डोलता है इसलिए ऐसा पैदा हुआ Spike down A. They will cower. See nothing. Many enemies A. दोनों साइड थे Blind fools. फ्लैश करेगा स्पाइक अपने पास है Enemy remaining. सेज लौड़े They're just batteries. तू ना 2 बार कांड भरा ठीक है कितना 2 बार Gotta go. Go, go, go. वापस ऑफ लिया है I have extra money if anyone needs. माइक खोला था शायद उसने. हाँ, क्या? It's over. हाँ. रिजल्ट यार सेज मारेगा अभी उसका उस पे साइपर अल्ट मारेगा Rest. भाई ओ भाई तालिया हो जाए ओ भाई इन आया वो. भाई कॉल भी नहीं है. कौन माइक कौन खोल रहा है जेट खोल रहा था उसका डीसी ओएस के लिए नहीं खोल पा रहा हूँ ये वो उधर I'm था. out of here. लेग शॉट मारा उसने ऑफ से. Running low. Last player standing. विंडी कल तो अपनी टीम में ऐसा नहीं खेल रहा था ये Take this. एक उधर है ऑपर है. हाँ. Spike planted. क्या मार रहे हो कल अपनी टीम में चूतिया ऐसा खेल रहा था वो जेट हमने ही चूतिया अच्छा खेलते क्या सब लोग Half. Don't be cheap. अपने में था क्या पहली बार. Spend it all. कल बॉल में कल देखो ना बोला इसका नाम A to Z है ऐसा बोला बॉल में क्या लिया था मैं वो बॉल और क्या टक्कर है तेरा. ये देखो A to Z बॉल हाँ ये देखो 20 किल किया था Gotta go. जो अंदर घुसता ही है वो घुसेगा. वो डैश अप ड्रॉप मारता है उधर से It's ground. डैश अप ड्रॉप मारता है ना उधर से वो Multiple enemies A. Gotta go. Off your feet! Almost out. Enemy spotted A. Take this. Reloading. Multiple enemies A. Still in sight. Spike planted. Here. तो मैंने टीपी मारा इधर को I'm out of here. पे
One enemy remaining. अंदर है अंदर है अंदर है. This way. Go, 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 go. Cutting their vision. क्या है मारा किधर मारा? जेट ने मारा कहाँ पे? इधर. Gun here. Gun here. Switching sides. I'm the last thing they'll get a see drop? before they die. Lucky them. सेज एफ के चले जाना, ऑल्ट F4 करके जाना, हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा. फ्री का और भी मिल जाएगा हम लोग को. चले जा लौड़े. Here. वो लड़की है सेज. तो मैं क्या करूँ बोलना? नहीं नहीं तो सॉरी चुनना चाहता है क्या मेरे? सिम करूँ क्या मैं? नहीं. Let's go. ओ माय गॉड गेमर गर्ल सिम करूँ. Go, go, go. Bomb buddy out. लड़की तो क्या ऑफ लेके भागने का क्या? दे देना जो करेगा उसको. जेट को दे, नियॉन को दे. Here. Here. Take this. नो वे क्रॉस फायर. नीचे नीचे आ रहे स्टेज पे डालना चाहिए था चूतिया को. Spike down B. ब्रो चालू इसका चाटना. तेरे को किधर से मारा? अंदर था. हाँ योरो नहीं मारा. कुछ भी शॉट लगता है यार मेरे को नहीं पसंद है लोग. यो मैं पहली बार ऐसा सेज देखा है जो शेरिफ लेता है. नो वे ब्रो नो वे. जी जी Wind. जी जी. Where to go? I'm out of here. देख रहा है तू रिप्ले देख रहा है तेज का. Gotta go. उसका लड़की छूती है सही. यहाँ फोर्स करेंगे एक अपना किल. एक किल हुआ बस उन लोग. उन लोग पुश करना. पुश भी नहीं कर रहे ठीक से उन लोग. अभी होल्ड ही कर रहे थे. Go, go, go. This fight. इसको शायद हटाते हैं. एच पंख है क्या इसके वाले? नहीं कहीं पीछे देख रहा है. और ले लेता मैं डालता. Good work. Where are you going? इसको बोल रहा है मेरे को. हाँ कहाँ को जा रहे हैं अंदर? अंदर इसको इसको वेट करते हैं. होली शिट. क्या फ्लैश किया? नया होगा होगी क्या टॉक्सिक? ओ भाई तू बोल रहा है? नहीं नहीं सबको छोड़ पूरी दुनिया में छोड़ के तू बोल रहा है क्या टॉक्सिक होना है? साइलेंस को ऑफ दे बोला ऑफ नहीं दे रहा है. ओपन में रिवाइव करके चला गया मेरे को. Last player वही standing. मेरे को लगा नहीं मारेगा. Spike down A. यो 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 यो. Look at me. I know. चल ठीक है I am by नया है ठीक है. ऑफ दे ऑफ दे कब चुप में साथ में खेल. आ रहा है आर्केड बॉल कर रहा है जा रहा है जा रही है. 2 राउंड उसने ऑफ लिया. 1 किल किया ऑफ से. 1 राउंड में मांग रहा था नहीं दिया. 1 राउंड जेट मांग रहा था नहीं दिया. I'll find their cipher. Bomb buddy out. यार इन लोग क्रॉस फायर में खड़े रहते यूरो और पता है. फिनिक्स. Watch out. Satchel out. Coming through. वे नहीं किधर? अबे किधर मारा उसको? वॉल थ्रू. कैसा मारा बट? ऐसा आईसी डिफॉल्ट स्पैम. नहीं अंदर है वो. Spike down B. अंदर. ले बैक स्टेप आ गया. Yikes. Last player standing. यो गेमर गर्ल. One enemy remaining. My ult's ready. ए पे.
I got the spike. हैं? अरे You are not him. मारा है। Spike planted. Okay, never mind. उसने टाइम पास कर दिया। नहीं गया। नहीं लगा, हेड लगा, हेड लगा, चूतिए। Oh, my back hurts. Everyone's so heavy. 15 मिनट का नहा के तो नहाता भी है। Yes. यस बोल रहा है। Out of here. अनअपग्रेडेड है वो। On क्या? my way. प्राइम No. On my mark. Go, go, go. Yes. फिनिशर हुआ था क्या? देखा नहीं। Gotta go. रोमन बहुत टीपी खेल रहा है लूडो साला। Go, go, go. नहीं, फर्स्ट पिक नहीं लेते उन्हें। आजा बे, अंदर आ। इधर मैं वही तो बोल रहा है। Reloading. Spike. I got spike. Spike I got drop. Spike. Grenade. I have the spike. Blocking sight. This way. Enemy spotted. Enemy spotted. Watch out. Gotta go. Spike down A. I got spike. Last player standing. वाओ 140। What will it be this time? I'm out of here. यो सरेंडर तो ट्रैश। कर दे। Gotta go. Change crosshair? लगा उसका। चेंज क्रॉसर क्यों बोल रहा है? क्या लगा है? क्या मेरा डॉट ही है? I have extra money if anyone needs. No prisoners. Grenade. Wonderful kill. Here we go. Shortcut. क्यों मार रहा है क्या ओमन? Blocking. अब तो हो गया। Almost out. My ult's not ready. Go, go, go. One enemy remaining. Enemy spotted me. अंदर है, मेरे पे करनी है। उधर जाने। और प्लांट अंदर का है। मैं बैठा था रुक। अब मत और रुक पे मैं करता पहले। Last player अब standing. होली शिट। Let's get these idiots. Need a drop. Reloading. Need a drop. Thank you. I'm out of here. Gotta go. ले, रोएगा नहीं तो बेंच छोड़। Let's go. दर्शक क्या बज रहा है? ये लड़की है? ठीक है फिर। और ये सैचल है? अच्छा सिपर डाल रहा है। अच्छा पार्टी में फिर ये और वो। Reloading. This way. Watch out. वो देख। Go, go. नहीं नहीं नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। तेरा वॉल था, ओमन का स्मोक था। Take this. कोट कर रहा हूँ। वो आएगा वो। फक। Last player standing. ये क्या कर रहा है? I have the spike. और ऊपर से मेरा ये भी था फ्लैश। यहाँ बोल। तुम लोग से वेंट्री स्पैम कर लेता बाद अब।
इसको रेव करेगा ये। Wall raised. यही नहीं पास काय को और प्लेयर फिर क्या फर्क पड़ता है। Light planted. My ultimate is ready. One enemy Jets remaining. grounded. ए रिवाइव करने जा रहे हैं। अच्छा इज इम्पोर्टेंट। अबे नहीं नहीं टाइम पे खेलना चाहिए इसको। जीत जाएगा शायद। ओ, वाह भाई वॉल किया है। दोनों नु I am not just your healer. Anyone have any splints? I may have jammed my fingers. नहीं मतलब खेलूंगी नहीं मैं। Can I get a drop? छी Go, go, go! Reloading. Gotta go! Forward. Get out of my way! Satchel out. Embarrassing. ओ भाई I'm out of here! For you. Watch out! Coming through! Blocking sight! Fuck it out, buddy! I'm out of here! Enemy spotted! ऊपर है। One enemy That's remaining. ready! Long. Gotta go! They're going to scan. वही दोनों बॉट एक साथ आ गए। Super easy to pick off. I'm out of here! टाइम लागणार हं तुम्हाला. नाही त्यांचं होत आलंय. दोनच बाकी आहेत त्यांना. लोग स्विफ्ट प्ले खेल रहे दोनों। 10-9 चालले त्यांचे. स्विफ्ट प्ले खेल लो। ये दोनों क्या हुआ? रेज और ये सेज। नहीं इन लोग दोनों को बोल रहा है स्विफ्ट प्ले खेल लो तब तक। जैकी भी आएगा। नहीं देख सनील नहीं बोल रहा जानी है. दो उधर से आ रहे हैं लेन से। Train harder. क्या तुम्हें लगता है वो आएगा? I have Take this! अबे यार ये भी स्टन हो गया। Duty is not over! गन उठाने आ गया था। Back where I belong. My ult flash. Reloading! Go, go, go! One Bridge था enemy इधर। remaining. चलो ब्लाइंड है। अरे प्लान कर। Get out! Let me go! Out of charges! अच्छा बॉडी की सिर्फ ऊपर गया तो भी होता है। Once more into battle. गन लिया ही नहीं मैं। गन फेंका तो भी उसका फिनिशर आ रहा है। No. Go, go, go! जैकी इधर डाउन आ रहा है। क्राउच करने का। क्राउच करना। नहीं मैं सिर्फ गन फेंका और उसके ऊपर गया तो भी आ गया फिनिशर। क्या जाने का बता जल्दी बता। ऐसे ही खेलते हैं, जिधर लोग पुश करेंगे वो किल लो। इधर से आएगा देख पुश। दोनों खड़े रहे। ब्लाइंड आएगा शायद ये। Watch out! स्टन हुआ है मैं भी स्टन है लॉल। ब्रिज रहेगा इधर। ऊपर फ्लैश दो। रुक रुक। Current division. Off your feet! चला गया उधर। One enemy remaining. साइबर साइड में ही है। साइबर साइड में ही है। हाँ मैं वो साइड लगा रहा नहीं है। क्लियर नहीं किया साइड इन लोग ने। ओ भाई Match point. निजा डिफीज हो जाता है उसका। Guillotina. Now pull. I'm out of here! चल अल्टे तेरा भी अल्टे मेरा भी अल्टे। I'm out of here! वो देखा क्या हो ये किया हो सिटी वाला यूरो वर्ल्ड लेके आया Good work. और जिधर बंदे उधर स्टन किया। बट तो भी हक दिया। फेड रहना चाहिए था क्या? I suggest वो we भी keep हो जाएगा। winning. बट तो भी स्टन था तो भी हक दिया।
पता है। आएगा आएगा, रुक रुक आएगा। क्लोन है क्या? 2 जने हैं। नहीं, 2 जन, हाँ। They're dead. मेरे तो मॉडर्न वेब पे चालू स्मोक जानते पे जाते हैं अपन। स्मोक में भरोसा नहीं है मेरे को। इधर देखना, This, gotta go. मैं इधर डालता। नहीं स्लाइड मार। ए बैटलफील्ड या ये भाई ना त्यांचा येतो शांत I'm out of here. मारा नहीं स्लाइड नहीं था मेरे पे। किधर था? सैंड। इधर ही है। वाह गया मेन शायद। Planted. प्लांट हो गया। जट किसे रे उनका? बैक स्टेप आया। One enemy remaining. इधर था ना? बैक स्टेप आया। There you are, you little shit. Attackers win. चूत के बाल। क्यों जीते अपन? को अच्छा लग रहा है। फ्रस्ट्रेट होके खेल रहा था अपन। हाँ ना अब भाड़ना क्या? मैं तो ऐसे किधर भी स्लाइड मार रहा हूँ कुत्ते से। अच्छा अच्छा। जाकी अरे, तुम लोग का हो गया? 2 मिनट रुकिए, मैं बेटा तो ये किया। बटा वाह रात को हिला रहे थे क्या? अबे डाउनलोड किया, मैं बोला ना सो गया मैं। डाउनलोड लगा के सो गए थे ना? हुआ भी नहीं अभी। हाँ हाँ क्या? डाउनलोड हुआ, ओपन है, ओपन होके देख रहा है मैं चल रहा है क्या नहीं। आह नो फ्लैट का था। जैकी बैटलफील्ड वाले को बुला पहले। हाँ क्या? बैटलफील्ड वाले को बुला। रुको अभी जाके भी आएगा। 5 जन हो गए। जैकी डायमंड लोग के साथ खेलता है। हाँ वही मैं बोला, आर यू श्योर आएगा? बोल के तो गया। हाँ भाई ना क्या है बोला? कर लो। ना क्या है कि नीला क्या है? यूसुफ की चालू किया इसने आज। इसका कीबैंड क्यों नहीं मिल रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसने दोनों अल्ट में रख दिया है। चैट ओ फाइनली मिला। राहुल ये चालू होता ऐसा थोड़ी होता जी। इनवाइट थोड़ा जल्दी कर ना, थोड़ा लवकर कर लवकर। देख बाइक सिखाने बोला तो बाहर जा रहा है। अभी देख गेम में आया तो बोला था। क्या हुआ? क्या ओपन पार्टी है क्या? बाइक सिखाने वाला देख इसको तो भूल गया। जानती तेरे को भूल गए हम लोग। रीजन अपना कौन सा सिलेक्ट करना है? सिंगापुर ना? इधर ऑस्ट्रेलिया दिखा। गपचुप बंद करके इधर बाहर रहो, समझा ना? अरे 2 मिनट देखने दे भाई, रो रहा क्यों है? जैकी क्रॉस प्ले। नॉट रेडी? बाहर आओ। कौन कौन है रेंज में? मैं? वो आ रहा है बोला ना। आ तो
लाइनअप्स Wherever they run, I will find them. मैं भी सोवा ही लेने वाला था. के ले लो. वाइपर खेलता ही नहीं मैं अभी इस पे. ये भाई इतना बड़ा क्यों दिख रहा है एसेंट? अरे दिसला का तुला पण दिसतंय का? हाँ मला पण दिसतं. 3 एकदम हाँ. दाखवलं ना. इन्हें है ना अपन इसलिए. मैं बोला कि मेरा ग्राफिक का कुछ हुआ क्या? मला पण वाटलं ते. They call me a monster. Shall I prove them right? Watching this location. है ना वो. काम करना. My ult is ready. My ult is ready. अरे एंड गेम करने जा रहा था मैं. My ult is ready. I believe in all of you. Like I believe क्या था? in myself. बताओ वापस. क्या? क्या था वापस बताओ. क्या किया था? अरे लाइनअप के लिए. अच्छा लाइनअप वो जो डॉट है देख ऊपर का. ऊपर का डॉट. हाँ अरे कितना मीटर होगा बताओ. हाँ तो सिंगल जो अरे एंड तो कर पहले. पॉज कर. सिंगल टैप देगा ना तो 20 मीटर जाता है. 1 चार्ज देगा तो 35. 2 चार्ज देगा तो 65. Scanning ahead. मार्क करके देख ले. मार्क करके मिड में मार्क कर. Right here. क्या 60. Right तो here. डबल चार्ज कर. फुल चार्ज नहीं डबल चार्ज. Revealing area. है ना. हैं? एक मिनट इधर ही गिरा. फुल डबल चार्ज मतलब जो सेकंड बार है देख उसके आगे होना चाहिए थोड़ा. Scanning ahead. मतलब अढ़ाई ऐसा. मतलब ये रखना है ना आपने जो डॉट है वो टाइमर के नीचे वाले डॉट पे. हाँ मतलब वो जो ऐसा ट्रायंगल बन के ऐसा आता है. हाँ वही. हाँ Scanning ahead. एनीमे में जाता है. रुक. अरे ये हेवन लगाना चाहिए था ना. मेरे को हेवन मार दे मुझे. शॉट डाल. मारो. हेवन लगा ना. हेवन लगा पीछे पीछे बैक. डाट के मार. Revealing area. क्या हुआ? एग्जिट करना है. हाँ हेवन. अरे मार दे ना. क्या मारू आपको? अरे मला हेवन लावायचं. हेवन लावायचं. अच्छा. कैसा मारू मी सेम टीम में. अरे नाही इकडचं बघायचं होतं मला हेवनचं ते घराचं. अच्छा. सेम टीम में कैसा मार सकते हैं चाचा में. शॉट डाट से मार दे ना. भाई दुनिया भर का शॉट डाउट लगेगा. बाहर मार बाहर दे ना. बाहर अनलिमिटेड तो है. बाहर है बाहर है. अल्टी भी तो है. तो आओ आपको मारते हैं क्या. कितना टाइम लगता है बाहर में. जान सुन आएगा एक दिन आएगा. लॉक 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 Wherever they run, लॉक लॉक I लॉक will find them. लॉक लॉक. शी लॉक कौन है. ओह बराबर टाइमिंग पे लॉक किया. Called bot for a reason. My ult is ready. 30 seconds left. मैंने तूने भी भी किया क्या. Stay on their trail. Right here. मैं कर रहा हूँ. पहले एक का वो देखना गॉड रिवील. थोड़ा पीछे दे. वो बैक खड़ा है ना. तू बोला था नहीं क्या. ओके. अच्छा इसके नीचे आना चाहिए ना. Revealing area. नहीं उसके ऊपर टिक रहा है वो एकदम. थोड़ा और आगे आना चाहिए.
नहीं वो बी में भी ये होता है, किधर किधर ये होता है वो बता। उसके ऊपर गिर रहा है। नहीं हाँ इधर गिर रहा है क्या? बट नीचे स्कैन नहीं हो रहा। इधर गिर रहा है क्या? ऊपर आ, ऊपर आ। रुको कि बैंड क्या है देख लो किधर है गोस्ट। आपका गिर रहा है इधर। इधर गिर रहा है क्या? अरे इधर गिरना चाहिए था किधर? ऐसे हाँ, गिर रहा है। इधर नहीं मैं जो डाला वैसे गिर रहा है आपका। इधर का रिवील नहीं हो रहा है पीछे का। रुक तो मैं देख, वो बोला रिवील होता है पूरा साइड करके। जोनस गलत था मतलब। Right here. आप टीपी लाइन अप सीख लो ठीक है। Revealing area. अभी देख Revealing area. और थोड़ा आगे आना चाहिए। हम लोग दोनों नहीं हो रहे। मार्क करके बताता हूँ किधर है ये डिस्टेंस। ओ 40 अभी आएगा। Scanning ahead. अभी तो आएगा ही आएगा। Scanning ahead. साइड में गिर गया सीधा। हुआ ना? साइड में गिर गया नीचे इधर गिर। किसके ऊपर गिरना चाहिए वो बता। इधर गिरा। गिरना किधर चाहिए? इधर गिरना चाहिए देखो। Revealing area. हाँ तो ये एंड पे ना इधर, ये एंड पे ना इधर। फुल राइजन बैटल रॉयल। Scanning ahead. देखो इधर समझा मेरे को? राइजन My ult is ready. क्या है। मेरा खुल रहा है बैटल रॉयल। खुल गया मेरा भी। क्या किया था? My ult is ready. वो कीड़े बहुत कुछ। आया रुक एग्जिट। Right here. अच्छा इधर नहीं गिर रहा है, इधर गिर रहा है। Revealing तो area. ऐसे बोलना मेरे को थोड़ा। तो वो डाल के तो दिखाया मैं और क्या बताऊं। अरे अरे थोड़ा सा। Scanning ahead. तो मैं लेफ्ट हैंडेड यूज कर रहा है ना इसलिए थोड़ा ये होता है। Right here. ओके मैं ट्राइड करके देखता हूँ Scanning ahead. क्या था वो। ये येलो भाई मेरे इसमें वो येलो ठीक से दिख रहा भी नहीं है। Revealing area. गिर रहा है क्या पता? तो साइड में गिर गया। आ गए। Right here. Scanning ahead. साइड में गिरा। Right here. Scanning ahead. अरे थोड़ा सा मिस हो रहा। Right here. Revealing area. थोड़ा सा और मिस हो रहा। अरे वो उसने बोला था एकदम पिक्सल परफेक्ट रहना Right चाहिए here. वो। Revealing और मैंने area. राइट हैंड पे चेंज किया, राइट हैंड से और Scanning ahead. अच्छा इधर अटक गया। Right here. Scanning ahead. नहीं हुआ ना उधर। Revealing area. Revealing area. तो हो जाएगा वो शायद। अरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है क्या। उधर ही ना। नहीं हो रहा हम लोग को थोड़ा और आगे। पण नाही अजून पुढे पाहिजे। Scanning ahead. वो लीफ पे आना चाहिए क्या वो? थोड़ा उसका लेट। एच पे जस्ट मिस। Revealing area. देखो काइंड ऑफ इधर इधर भी चलेगा, Revealing area. इधर भी चलेगा। आता है क्या पर वो बाउंस होके रिटर्न जाता है ऐसा Scanning कुछ? ahead. ओ आया आया आया। ये वाला है। परफेक्ट। अलग हाँ। हाँ परत देखे कर बार। Shock dart. Shock dart. यस बरोबर है। पर अच्छा फायदा ना है ना। क्यों नहीं। कुछ कहे तो क्यों फायदा नहीं है। है मतलब एक तो भाई इतना टफ लाइनअप है ऊपर से
इजीली मार सकता है वो तो। नाही मी लेफ्ट हँडेड यूज करतोय. इजीली कैसा मारेंगे? एक का लाइन में पता है कि जब आप साइड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, समझो. ऊपर नहीं मार सकता क्या? सुनो नो, समझो समझो. आप इधर खड़े हो ओमन, ठीक है? अरे वो वाइपर नहीं खेलता है. मैं इधर खड़ा है, फेड खड़ा है इधर, ठीक है? वाइपर आपने नाही आहे. मारला आपने Right here. अरे आप- सनील काय Here. तो सो भी नहीं खेलता है. डार्ट मारला. इधर 3 डॉट Scanning ahead. किधर 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 रिवील हो रहा है मैं? डॉट म्हणजे Area. तो सेम शॉट डॉट और रिवील मारो. बोलो, रुको रुको रुको. हाँ. ये हाथ दिया है वाला पढ़ो. किधर? नहीं, ये वाला हाथ दिया बोल रहा है ना मैं, इधर ही नहीं हो रिवील. रुको रुको रुको. Revealing area. Scanning ahead. Right here. ना. Scanning ahead. Right here. रुक, मेरे को ये नहीं, मेरे को ये वाला ट्राई करने का. इधर आ सुअर्स में जाना. Revealing area. Revealing सुअर्स area. में कहाँ था? I am the hunter. My ult is ready. Scanning ahead. Scanning ahead. We found them. Revealing area. There they are. कितना चार्ज चाहिए? Shock dart. Shock dart. नहीं. ओए मरा. Trick shot. अरे लगा. It was you or me. काय? बसलेला तो लगे. I am the hunter. My ult is ready. हवा में क्यों उड़ रहा है? I am किधर the था वो? hunter. अच्छा My इधर ult is था. ready. गलत कर रहे हैं. ओ हाँ. अच्छा अच्छा अच्छा. I am the अभी याद आया. hunter. My ult is भूल ready. गया था. अरे अरे सॉरी, इधर नहीं. Scanning ahead. Found them. What the fuck? Revealing area. Scanning ahead. Yo, Revealing area. yo, लग जा. Revealing area. भाई टोल कर रहे हैं लोग मेरे को. हाँ लग जा. There they are. Scanning ahead. ए देख सुअर में जाना. कोई सुअर में गया नहीं. होला. अरे अल्ट नको मारू. My ult is ready. अरे मला दिसणार नाही मॅप. अच्छा हा Shock ठीक आहे dart. मार. काय करायचं आपण? कुठे थांबायचं ते तर बोल. सुअर सुअर. Shock dart. मध्येच आहे मी. Shock dart. हा आतमध्ये थांब एकदम. Last player standing. Shock dart. ये अंदर जाना. मिनट. Shock dart. गया क्या? Last player. किधर अंदर? साइड में. सुअर्स अंदर ही हम लोग. टाइम लागतो त्याला यायला. हम. अरे अच्छा वॉल बैंग. ओके 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 ओके. क्या तू. और वो हटा है जरा. Revealing area. इनवल्नरेबिलिटी. क्या 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 क्या. कुछ भी चल रहा है. ऑटो Revealing area. रिस्पॉन्ड मत हटा. क्या बाउंस था वो? और पत्थर पे लग रहा है. Scanning ahead. Last player standing. कुठून मारला? इधर से वॉल बैंग. मला ना बसला पण. My हुआ ult ना. is ready. नाइस वन. ए वो वैंडल से होते क्या देखने का मेरे को. रुक गार्डियन से होता है, वैंडल से नहीं होता. देखता ना. ट्राई कर रहा. कर दिया वही सब. देखा है तूने? हाँ. Revealing area. लगा नहीं तुम लोग को? ये आना भी नहीं है. नाही. अरे वही बोल रहा ना, नहीं होता वैंडल से, गार्डियन से होता है.
एक मिनट अभी गाड़ी नहीं सर Scanning ahead. गाड़ी नहीं जोपी Revealing area. Revealing area. अपना सोवा मैन कभी ये यूज नहीं किया रे अपना सो में सिर्फ बैकस्टेप देखता है, मैं बैकस्टेप देखता है। नहीं हो रहे नहीं मर रहे तुम लोग गलत जगह मार रहे शायद। हेलो, तेरे हेड पे ही मार रहा है मैं गलत जगह से वैल्यूइंग कर रहे हैं, ऐसा बोलो। नहीं इधर से वॉल बैंग हो रहा नहीं क्या जा रहा है अंदर इकडे पेनिट्रेट ना होत. अरे हे काय जातोय हा पण तू इकडे इधर से तू मारो। तिथे सामा का हाँ तर तू मेरे इसमें आ ऑपोजिट इसमें राहुल तू तिथेच साम Level heads until we're एक क्या home, yes? अबे एंड क्यों किया एंड करना है बटन तभी आएगा सिर्फ। नहीं हाँ आ गया था अरे आ गया था तू आ गया। अरे बाय फेस ये करो पहले. Track them down. नो Scanning ahead. Scanning ahead. आते हुए देखा मैंने उसको There they are. हेलो, अरे इधर से रिकॉन डाल रहा है मैं सीधा। Area. Found them. गार्डियन ले इधर आ जाऊ दे. आया क्या रिकॉन कौन डालेगा? मैं डाल रहा हूँ Running ahead. इधर है यार, हिलो मत बस। 2-2 3-3 टाकून ठेव. अबे यार किधर गया हाँ दो दो डाल वही, एक साथ दो डाल बस। वरती गेला कुठेतरी तो. ओके बुलेट्स येतात. तू हेल्थ पर हे केलेगा हा इनवल्नरेबिलिटी ऑफ है ना हा Revealing area. ऑटो रिस्पॉन ऑन आहे फक्त Scanning माझा. ahead. आला There they are. बस Revealing area. ना देगा कुछ भी नहीं। वही तो अच्छा कैसा है, एक तो रहेगा Scanning ahead. ये है। टॉप ले एक मिनट रुको, थोड़ी यूज करना. Scanning ahead. रुको तो सही। Found आया. them. Revealing. इधर गया रे रिकॉन. हाँ Found them. है वल्नरेबिलिटी ऑफ कर तुझा हाँ ना वही रे तो क्यों नहीं लग रहा है फिर ये क्या है? माझ्यावरती अल्टी मार माझ्यावरती चेक कर. हा एक आहे. अरे फिर मेरा ऑफ क्यों नहीं लगा फिर? ऑफ कर ऑफ. तेरा ऑफ शॉट क्यों नहीं लगा वही बोल रहा है ना मैं। नहीं बैठ रहा है. रुक, मैं off लगा. यूज करो. नाही ऑफ अरे ऑफ नहीं बसलेला ना याला मारलेलं मी हा कारण तो वरती होता. अच्छा थोडा वरती जा तू ते रॅम्स आहेत ना त्याच्यावरती अनसेफ हा, तिथे जा रॅम्स आणि, मारू शकतो इकडे नाही मारू शकतो. उड़ीन से लगता है वो रैम्स से बस जाइए Revealing बघितलं area. रैम्स के ऊपर जा और ये ले गार्डियन ले यो मेरा लाइनअप है Revealing क्या area. दिखा नहीं रे क्या है ये. ऐसे डाला मैं कुछ नहीं देखा मैं। अभी मारो. Found them. हाँ अभी लग रहा है देखा. इधर क्या रहेगा सीन पता है क्या हाँ, इधर है ना Right here. ये देख इधर रहेगा ना तू. रिकॉन डालो उधर, रिकॉन डालो उधर। इधर Scanning ahead. Ah. There they are. हाँ मार. किधर है बंदा, किधर है? क्या इधर ही Right है here. टैग नहीं दिखा रहा मेरे को, टैग नहीं दिखा रहा तेरे को रिवील क्यों नहीं दिखा रहा है Found them. एक क्या नहीं दिखा रहा है? अबे कुछ भी मेरे को दिखा रहा है घोस्ट इसके लिए क्या? नहीं मेरे को नहीं दिखाया देखो। जा तू जा उधर रिवील कर जा देख रुक क्या चालू है. मेरे को हाँ. नहीं दिखाया रिवील। एक मिनट मेरे को राहुल दाई नहीं दिखा रहा। एक मिनट कौन से नाचो एरेक सिवोडी नहीं दिख रहा है तेरे को? नाइफ लगा ओके अभी आया राहुल दाई। Scanning ahead. मेरे को सिर्फ आपका बॉडी ये दिखा रहा था ओडी इधर नहीं उधर खड़ा रहेगा तो नहीं लगेगा इधर। देख उधर पेनिट्रेट हो रहा ही नहीं है कुठे उभं होता नंतर तो इथे वापस चलो रॅम्स वरती. Scanning ahead. There they मार are. अभी. हाँ तो ये जब ये इस पे रहेगा ना सुअर्स के स्केच पे इधर काम नहीं करता है ये स्पॉट्स. हाँ वो स्पॉट पे खड़ा डालो रहेगा। फिर अभी जिधर खड़े उधर डालो एक जो इधर नहीं लग रहा है बोले आप। Revealing area. Found them. बहुत रेयरली लगता है. तब तक तो मूव हो जाएगा एनिमी. ये ओडिन भी नहीं कर रहा। हाँ ना बेटी ओडिन दिख रहा था बस। ओडिन पेनिट्रेट हो रहा है पर वो भी क्या बोलते हैं एक बुलेट पेनिट्रेट होता है उसका बस. कितना चार्ज? गलती से लगा तो लगा. डबल Revealing area. डबल Scanning ahead. और डबल ये
Scanning ahead. तेज बाउंस बोलो Revealing area. टीम पे ये सब मस्ती कर रहा है तुम। There they are. ना 1 मिनट वापस बताओ मेरे को अरे ये जो दिख रहा था क्या क्या ये है क्या बोलते Right here. हैं ये क्रॉसर उधर रख तेरा हाँ लेगा अभी और वो ये दिख रहा है Right here. हाँ ये तेरा डबल चार्ज का वो ये है ना बीच में का ओके सेकंड चार्ज वाला है देख सेकंड चार्ज वाला हाँ समझ रहे क्या बोलो वो हाँ डायमंड हाँ, समझा 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 सेकंड चार्ज का डायमंड का लेफ्ट साइड का जो कॉर्नर है ना लेफ्ट साइड हाँ उसको लगा दे वो इधर आना चाहिए इधर ओके और डबल चार्ज मतलब 2 होने के बाद या सेकंड वाले में डबल बार के थोड़ा आगे गया ना उधर तक काफी है Scanning डबल ahead. बाउंस चाहिए क्या और कम नहीं है थोड़ा अंदर वो जो ये है ना ये उसके थोड़ा ऊपर रहना चाहिए थोड़ा सा ऊपर मतलब टच मत कर उसको वो डायमंड से Revealing area. डबल बाउंस बाउंस क्यों नहीं हो रहा है मेरा बाउंस ही नहीं हो रहा ओए बाउंस क्यों नहीं हो रहा बाउंस कर डबल बाउंस डबल पकड़ के क्यों रखा है छोड़ो उसको Revealing area. क्या Scanning ahead. अंदर आया हाँ Scanning ahead. करेक्ट आया क्या अंदर हाँ पहला वाला आया था बस कोई ना चलो आ गया बी साइड के बॉक्स के इधर से मारना छत पे क्या वो उसका। बी साइड के बॉक्स के इधर से ये वाला क्या लगता है इधर से लगता है क्या इधर क्या अपना डमी किधर है अपना हाँ, हेलो वो भाग गया नीचे हाँ आओ। उधर से भी मार सकते उधर से ऊपर से रुक ना रुक हाँ थांबा का तिथे उभा I am the hunter. My ult is ready. इकडे आहे, मी इकडे आहे. वरती नाही वरती नाही वरती खाली उभा राहा खाली खाली इधर इधर आओ खाली. जिकडे लागत नाही बुलेट्स तिकडे हाँ तिकडे ये आलो. अल्टी नाही मारू शकतो. डबल बाउंस तो वही तो वाला मेरा भी नहीं हो रहा तो भाई जैकी का हुआ कि नहीं नूब तो इधर जैकी को बुला तब तक बॉट बॉट हेलो Revealing area. ए थांब रे कुठे आहेस तू तिकडेच आहे ना हा तिकडेच आहे ना. गया मैं आपके मारो हाँ, आया आया। ओह शिट इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ आता मारून दाखव. नाही नाही इधर आ इथे ये तू आहे ना आतमध्ये जा गॅरेज मध्ये जा ऑपोजिट गॅरेजच्या इथे राहा कुठे इथे कुठे तर मध्ये गॅरेज गॅरेज इथे उभा राहा आणि एंड ये वॉल लेके आ रुक 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 वॉल लेके Revealing आइए अपना area. बाइंग वॉल There they are. इकडे तर मारू शकतो. मी नाही मारलं ते जा जा आतमध्ये Scanning जा. ahead. Found them. Scanning ahead. ये वाला देखो Revealing found them. क्या नीचे हाँ नीचे बाउंस करने 1 मिनट हो रहा Scanning ahead. तो क्या गलत किया मैंने Revealing area. what the fuck There they are. what the fuck Ahead. ah Found them. ये Revealing area. ये यो यो डमी है हेलो डमी उधर ही आहे मैं. हे कुठे काय आहे? रिव्हील कैसे कुठे नाही होत? लागला माहितीये का तो Scanning ahead. इकडे आतमध्ये लागला. There they are. एक मिनिट थांब Revealing area. A second wind. तू गॅरेज मध्ये Let येऊन your उभा राहा senses come alive. तिकडेच तिकडेच. सेम हा तिकडेच सेम I am the hunter. My ult is ready. तो दे. टाइम ही होने दे रुक 30 seconds left. We are strong because we are टाइम tired. अपने आप जाने दे Don't forget. अच्छा अपने आप जाने दे टाइम देखा सोआ नहीं फिर भी पता नहीं वो पता तो है साले सबको बोल रहा है
हम लोग पर उधर का ट्राई करते हैं ये वाला Right here. पता है आला का आलं बैरियर्स एंड तर कर एंड टाइम जाने दे बोल रहे भी है। नहीं अभी मैं आ गया ना उधर तू जल्दी कर दिया था तूने Revealing area. क्या था ये यो डमी हाँ उधर ही है साले ये भी क्यों नहीं हो रहा है क्यों मार रहा है Scanning अच्छा अभी अभी रुको आप इधर जल्दी आओ सनी जल्दी आओ आपको सिर्फ गन दिख रहा है क्या देखो मेरे गए राउंड में हुआ तो नहीं वो उसका बॉडी दिख रहा है मेरा टाइम पे रिवील नहीं हो रहा था सिर्फ गन दिख रहा था डाल तिकडेच थांब आलो नको इकडेच आहे रे साला I've survived much worse than you. कितना ऑफशॉट कर रहा है ऑफशॉट से Enemies close. अबे बंद क्यों किया क्या चल रहा है ये बंद क्यों किया बट देख रहा है ना कितना शॉट लगा हम लोग भाई ये बॉर्ड भी चला गया किधर को बॉट ही है आज जैकी को मैसेज कर रहे जाऊँ क्या मैं भी बैटल ये ना ए थांब रे ये कुछ जिंदा रहने का कि नहीं टाइम पण झाला आता तर आला का तिकडे हा तिकडेच आहे Right here. हां Revealing area. क्लासिक मी नाही मरणार Scanning ahead. क्लासिक नाही ना होत क्लासिकचाच तर आवाज होता तो हां तेच बोललो क्लासिक नाही ना Scanning ahead. Revealing area. Revealing area. Scanning ahead. लागला का आता हा? बसला बसला एक हेडशॉट बसला आय गेस डब्ल्यू मॉड There they are. Revealing area. Found them. What do you say, drone? Ready to stretch your wings? कोण तर रे कोण आहे 60 बसतो का आता हे काय चॉकलेटचा हा काय माहिती चेक कर एकदम निघाले का तुम्ही लोक नाही नाही आहे ना Break away. Right here. डायरेक्ट हिट 30 seconds Right left. here. अरे कोण एंड केला Clean ये मिड slate. मध्ये Let's leave whatever happened in the past. Hawk out. मिड मध्ये आहे. मिड मध्ये झालं ना आज तो कोई फॉरबिडन फ्लैश देगा नाही रे किती किती आहे? बसला हा गन्नी मार हेडशॉट दे Hawk out. किती एंड कर देख रहा है Make sure to follow my package. अरे Go lead us. अरे हेडशॉट दे यार तर तुला हे होणार ना रे काय रे बाबा ऑब्जेक्टचा पण तर येतो ना डॅमेज Look, I know I Nice. didn't grab the Nice. spike, but none of you did either. काम So कर it's not just my हे नको घेऊ Hawk out. शील्ड नाही शिल्ड घेतलेली नाही मी. नको घेऊ तुला एक नाही zero. होतं का? Hawk out. एक मिनिट थांब What a spawn on तर Hawk out. हा दे डायरेक्ट हिट रोलांड खेलने का ना इधर छुड़ाने का Hawk out. मां के इधर लेने का हां हम देखेगा फेल देना Hawk out. यो 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 अपाइज Hawk out. तुला कमी देणार ना Hawk out. Hawk out. Last player standing. द फक Hawk out. किती 78 बसला मला म्हणजे 78 हे झालं हाय हेल्थ 70 असेल और करते थे बंजी वन का एकदम मध्ये मार Hawk out. काय मध्ये कुठे चेस्ट वर थांब रिव्हील करतो तुला Hawk out. हा पळ देखा हमें देखते बेटू राहुल एक मिनट इधर आओ ना हाँ? इधर सिटी से आओ आप जाओ सिटी जाओ पहले सिटी जाओ इधर सिटी से वो सिटी क्या सिटी सिटी ये वाला. समझो स्पाइक प्लांट ठीक है हाँ ठीक है हाँ. आपको मेरा लोकेशन नहीं पता ठीक है आओ डिफ्यूज करने का Hawk अच्छा out. वैसा राहुल त्याच्या अच्छा Hawk out. Blinded.
enemy remaining. One enemy remaining. One enemy remaining. One enemy. अब गन रख देख रहे One enemy remaining. कैसा था फ्लैश? फ्लैश लगा ही नहीं वो। अब बट आपको ये तो समझ गया ना कि लॉन्ग से करके नहीं इधर से आया वो समझ गया नहीं। किधर से आया? इधर से ये क्या रहेगा ना किधर से? Blinded. उधर से आया ही नहीं वो साले। Blinded. इधर से नहीं इधर आया? से आया किधर? इधर से आया किधर से वो फ्लैश तेरा? किधर से? फिर Hawk out. अभी वो लग रहा है क्या रहेगा? पर फिर भी पता चल जाता है रे। Blinded. ऐसा मत चल। Hawk out. अभी दिख रहा है वो दिख रहा है तू टर्न किया उधर। Hawk out. तो लॉन्ग से भी टर्न किया ऐसे दिखेगा ना फिर। Blinded. अभी आपको मैं बताया है इसके लिए पता चल रहा है आपको। नहीं बे वो पता चल जाता है ट्रेल। उसके पीछे ट्रेल भी है। वो तू लो ग्राफिक्स पे खेल रहा है क्या? हाँ सब लोग ही पे खेलते हैं। वो हाई ग्राफिक्स पे थोड़ा ट्रेल दिखता है उसका। Blinded. Hawk out. बहुत बड़ा ट्रेल है उसका। Hawk out. लगा ही नहीं। छत पे फोड़ा इधर किधर तक दिख रहा है क्या? Hawk out. चल स्वीप गेम खेलते सब लोग। Hawk out. किधर गया ये? Hawk out. अरे लाने गया था। ये अभी आए वो Seek them out. My ult's ready. Hawk out. ओ क्या मतलब? अभी आए। Hawk out. Found one. Blinded. ये भी Hawk out. Seek them out. My ult's ready. Hawk out. Found Nahi. one. Hawk out. Hawk out. दोनों गेम में अभी Hawk out. निकलना है क्या? Hawk out. अरे यार शी तू तिकडे उभं राहून गार्डन जॅकी आहे की नाही? तिकडे बघायचं होतं. ये लवडूस Watch this. Watch this. लवडू आया नहीं अब तक। पंद्रह मिनट अभी इसका भी टाइम लग रहा है। जो बोलता है ना बाथरूम में 15 मिनट में आएगा वो कभी 15 मिनट में नहीं आता है. फोन में बाथरूम में फोन लेकर बैठा लगता है। एक काम करो तुम लोग का चालू रखो ये फालतूगिरी। मैं आता खाना खाने के बाद ही। आ रहा अपन दिनों खेलते हैं। तब तक एक एपिसोड देख लेता हूँ। बड़ा गलत टाइम वेस्ट कर रहा। ओ भाई माय व्यूअर्स Match found. ए ले भाई अरे मेरा वैलेट चालू ही नहीं हो रहा है। 2 बार स्टार्ट मार चुका हूँ मैं। भोसड़ी के डिस्कॉर्ड पे आना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर। एक कुछ में दोनों में से एक तो कर सकता है ना। रिस्टार्ट किया है, देखते हैं तीसरी बार चालू होता है तो क्या चल। वैनगार्ड एग्जिट करने के बाद वापस रिस्टार्ट किया तब चल। भाई डॉज कौन कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा, पागल है क्या? मेरे को बैन लगेगा अभी।
सत्तू सुपारी करता करता कौन कर रहा है? तू? एक और बंदा चाहिए ना कॉम्पी के लिए। बुलाओ बुलाओ एपिसोड चालू करने से पहले जल्दी कॉल करो अल्लाह को। मोबाइल भी बाजू में रखा रहेगा क्या पता नहीं। किसकी तरफ से कौवा का आवाज आ रहा है? Choose your agent. क्या? आला हाँ आला तो अरे वो आ गई वो आ गई ठीक है रे, ये कर ले तुम। हे करायला लागेल आपण मध्येच काय बोलतात काय? सरेंडर क्यों? आधा घंटा ही बाकी है, आधे घंटे में नहीं होगा खत्म। ये एक मिनट है। हेलो हेलो एक और है। मेरे को क्या बता भाई, तूने ओपन पार्टी रखा है वो भी सोचना। तेरे पार्टी से आया शायद वो, मेरे को तो लग रहा है। हाँ मेरा कोई तो दोस्त है, मैं उसको इसलिए इनवाइट तो? नहीं दिया है। मैंने अच्छा, इनवाइट ठीक दिया है। ही नहीं। तू तेरे को तो तेरे को पता भाई क्यों बोल रहा है? फिर बोलना मेरे प्लेस में से आया कोई तो। देना क्या करना? 100 खेलना क्या? अनरेटेड लगा। ये भी ठीक है। स्टार्ट करो। क्या रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट भेज रहा है इसलिए बाकी आग बोल रहा है सीधा अनफ्रेंड भाई। रोमन भी फ्लैट पहुंच गया क्या? हाँ तो नहीं है, अच्छा सिल्वर सिल्वर 3 पे ही अटका है मैं। तू तो होने वाला था ना गोल्ड अभी जस्ट। सिल्वर 3 तो पे सिल्वर 2 पे आ गया। टेल मी व्हाट सिल्वर आई 3 दिखा रहा है। क्या सिल्वर टेल मी व्हाट 3 आई डोंट तेरे तो तेरा पता है मेरे को डायलॉग। मैं लेवी को पूछ रहा, लेवी क्या बोला? सिल्वर 3 पे ही दिखा रहा है तू। पे 33 गिर के वापस 3 पे आया। Partially blocked. This video contains copyrighted material and has been blocked in some countries or regions. तो कृपया करके अपने कान भर दो। बंद कर। करो चलो। नेटवर्क 22 सेकंड बैन है जिसने क्या कोनार थी बैन है। सत्तू सुपारी क्यों रे क्या किया? डॉज खेला बिल्ड की दी गई मैच में नो नाइस बूप्स। तो बोली में सपाटे गए। हमें बोला सपाट सुपारी सपाट सुपारी। बॉट चेक हेलो। बहुत
रसोई वापस बाहर जाने का है। इधर भिवंडी ब्रिज के नीचे भिवंडी ब्रिज के नीचे राहुल को लेके जाने का है। ऐसा का काम हम नहीं करत। मैं क्या बोला, खाली ब्रिज के नीचे बहुत सारा काम रहता है। जातोच ना मी बाहेर, बराबर आहे। तूच जा भाई। I just literally want to rock so bad right now. Jet's grounded. Satchel out. Spike down A. Alright, the bomb. Ready for me. कितना टाइम की लग रहा है? I just want to rock. One was मैं कर ना Body yada yada. AJ, man. Cypher unknown. One enemy remaining. Hey. Oh, right close. Enemy spotted A. Oh, yeah. Oh wow. Oh, that that was was beautiful. Oh. नहीं पता नहीं जी कौन क्या नशा करता है। Match found. Hey guys, what's going और ला लो सब लोग रेट लो on? James here, back with Get You. We can do that and show you exactly. I'll leave the link for that down below in the description. But it's called Noboard, and it's super easy to download. You just want to click this. ये क्या है कि वाइपर लूं? वो डेल्टा ने बोला ये क्या है मैं लेता हूँ। लेगा तू? मैं लेता तो तू खेल, मैं फेड लेता हूँ। राहुल डबल डोर्स आणि वाइन्स बघ तू। 8 सॉरी वाइपर कौन लिया? 8 बघ। मैं एक लाइन पता पहले सी टाइम पास देख लिया मुझ पे तू तो खेल रहा था बहुत इजी लाइन पे डोर के लिए पीछा हुआ ए राहुल या काय सुन रहा है।
बोललो डबल डोर्स आणि हार्ड बग बैठा नको बघू. तुम लोग रिप्लाई नहीं है टीचर. What we need to do. First thing we need to do is download a third-party tool from उसका टीम GitHub. बुला I'll रहा है, leave the जैकी का link to टीम that बुला रहा है. down आइजर अब जैकी का टीम बुला रहा है. ये बोला है उसको बुला रहा है, ऐसा बोल रहा है वो. क्या जैके अगर खेलना चाहता है उनके साथ तो खेल सकता है, ऐसे कुछ नहीं. जबरदस्ती वो नहीं. रोज खेलने बुला रहा है. वही तो बोले हम लोग. क्या अरे इसको अरे मेरा हेडफोन नीचे था. किसके पीछे? मेरे छी हेडफोन डालता है. सी देख सस्ते में तेरे को सेंसर करोगे तो मेरा स्ट्रिप पुनीत वैसे तो सस्ते में बताना तेरे को पड़ेगा. फेस में मिल जाएगा. लकड़ी का फायदा नहीं रहा अभी. Hey, the gang's all here. This is great. They don't stand a chance. ठीक है ना. अब जब अपन ये खेले थे पिछला मैच फ्रैक्चर, सर चेंज करने क्यों बोला? क्या चेंज कर रहा है? क्रॉसर क्रॉसर चेंज करना है. बट वही आपने आगा क्या? तो उसके इसमें दिखता नहीं रहेगा उसको शायद, इसलिए क्रॉसर चेंज करना है बोला. बट का फायदा नहीं पहुंचा उसको लगता है. ही इज फुल ऑफ डॉट. ए यो डॉटेड का आदत नहीं उसको सर. No charges left. उसको डॉटेड खरीदना पड़ेगा. फक उसको भूल गया मैं. अरे साइपर का आला. Enemy A. आई ओए नहीं नहीं रोहित. हां पता है. One down. नाइस. जस्ट रुक मैं रिवील ले रहा है यार. Mark 2. दो है इधर. बी चला जा. Poison orb emitting. बी भाग जल्दी. बी भागो. तो लो यार करो. अरे राहुल जा सोबत तेजा भाई. कॅमेरा नको बघू. अरे Poison's off. कैमरामैन सुरेश. इंटरैक्ट मीडियम को नहीं जाएगा. Bring them down. अंदर डाल. अरे वो थोड़ी देर Hello इधर everyone, my name is पता चल Kobe. गया. Play. लॉन्ग ने So step 1, जेट go to Enemy A. download निकल मैं रुक रहा है. and select. ये आ गया. Sleep. Tagged. मेरे पे My eyes are down. इधर है मेरे पास. सिटी एक है. फिनिक्स है. हाँ दो है दोनों सिटी है. ठीक आ रहा है. I'll find you. रिवील आया तो पता नहीं. मैं ऐसे डाला. प्ले तने हे टाकला बॉल टाकला. Hold. अरे मेरा बुलेट खत्म हो गया. One enemy remaining. They will scurry बाय. and then they will die. अरे राहुल तुला माहिती आहे का इथून आहे ना स्नायपरचं मी सेंड केलेला ग्रुप मध्ये. तू कॅमेरा टाकतो. हा ते वॉल बँग वाला ना. हा तो मला लोकेशनच नाही कळलं काय सीन आहे त्याचा. आता ते बघ ना तुला फाइंड आउट करायचं त्याने कसं टाकलंय. अरे तो लोकेशन नाही दाखवत बरोबर. बाय तोच नहीं ले ना रहे तो क्या डॉग तुम? वाला नाही है ना. Isolate them and kill them. तो डॉग है तोच ना. हस्की. अरे यार सनील के साथ रुक आया. सनील नहीं, तो अरे नहीं, नहीं, राहुल रुक आ रहा है. बाहर पूरा काउंट दे रहा है बंदा. नाइस. Got him. नाइस. रिपेयर है. स्पॉटर किसको चाहिए? क्या है? फिनिक्स है इधर. There. अरे बरोबर रिवील आहे. दो. तू घुस रहा है राहुल. देव ना. ये आठ रिवील में को- मत घुस बिलिंग. इधर छुपा है. Here. राहुल आपके स्पाइक है. भाई नहीं 63. Someone's a बुलडॉग. 55. Last player ये standing. क्या? अरे Spike block. down mid. 1 मिनट. 2 जन मर गए. 3 जन मरे ऐसे जाके. रोमन नहीं मेरे बाद रोमन और ये ब्लाइंड नहीं यार. मेरे पे रश कर दिया. फाइट ले रहा था तभी तू भी फाइट लेना चाहिए था. अरे मैं सोचा ब्लाइंड कर. 55 दिया उसको. कोई नहीं. जेट डैमेज करते. Get me in the line. हाँ मारा ना मैं उसको.
एक नंबर ये आया फाइनली। Reloading. रिवर दे रिवर मार। I need this. My thanks. आजा क्या करना है? Now, where to set up shop? राहुल तिथं अँटी हे क्या नियॉन आहे ले और अजून क्लोज या रिलोड कर पाहिजे तर सोबत आहे एक मिनट थांब। हा कोण नाही ना और भी तुमने रिवील दे रहा है मैं साइड भाई साइड क्लोज राइट यहाँ पे क्लोज राइट है Stay down. नाइस प्लांट है राहुल One enemy remaining. ऑप है सिटी ऑप ले लो जाओ। Planted the spike. वैंडल है ले जल्दी। Weapon here. Their crew got sloppy. Punish them. कर रहा है आइजा राहुल वैंडल मांगना सीधे अजन दिला उसको जेट को किसने मारा था? मैं दिला तर My thanks. जेट को मैं 34 दिया बॉडी इसको मारा ना अजन को मैं स्प्रे मारा डायरेक्ट उसके ऊपर Stay focused. मैं घूम के आता ये रे केएफ के गया ब्लाइंड इधर चाहिए तो नियॉन राहुल नियॉन को स्लिप तुझ्याकडे नाइस टाक टाक होली शिट फिनिक्स फ्लैश कर गया। चलो ए में चलो वॉक कर भाई पूर्ण तो फ्लैश करके फेंक लेगा शायद। चलो करो 3 जने जाओ एक उसको 3 जने दो। अबे यार कुछ कर दी राहुल आठ क्लोज तुझ्या राईटला होती राहुल राईटला होती तुला सांगतोय मार नाइस उन लोग उधर दो यार हां दे डिफॉल्ट दे रिकॉर्ड दो। हां दे भाई अभी छोड़ रहा क्यों है दिया है तो राहुल मागून खेळ पीछे से खेलो अरे पीछे से खेल राहुल तुझा पण हेल्थ लो आहे हां एक मिनिट बघतो ना एकदा हे करून नाइस एस पार्टी आहे पुढे कुठे चालला तिकडे हा इथं लप पाहिजे तर होली शिट नाइफ नहीं आया था नाइफ तो नहीं आया था उसको मार के स्कोप मारा मेरे को भी नहीं पता दे दिया कुछ तो असं फिरून त्यांच्या सिटिंग कडे जा गन ठेव बाय ऐसा है ना तो फिनिक्स के पीछे रहेगा मुझे लग रहा है इधर ही है वो देख पे राहुल क्या बचा एक काटा उसने मेरे को 75 तेरे को काटने के बाद पता चला पीछे आया नहीं जस्ट जैसा मैं ऐसे मतलब पीछे मुड़ा उतने में उसने काटा नहीं तो मैं मर जाता ना पूरा पीछे काटता था मेरे को और लेने दे इधर हैवी अटैक दिया और शोल्डर पे लगा शायद नियॉन उनका थ्रो कर रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि वो 2-3 राउंड डायरेक्ट पुश कर रहा है इधर Fight harder. फ्लैश कर इधर Here. जाकी फ्लैश कर बोला वो ओके शिफ्ट ऑफ करके जा रहा है Flash out. ये क्या कर रहा है ये फ्लैश है वो कब का बोला नाइस My ult is ready. रिवील दे रहा है Lock in sight. प्लांट दे जाकी डिफॉल्ट दे दे वो साइड फेस करके वेट कर हां वो साइड फेस करके बैकस्टैप ओ Spike planted. मैं ये डाल रहा हूं एवन देख रहा बैक मैं बैक देख रहा तुम लोग खेलो ब्लाइंड देना रहेगा तो बोल देता हूँ No charges left.
One enemy remaining. गिर रहा है क्या देख से मॉडी गिरा भाई परफेक्ट है अच्छा बेटा ओ भाई क्या ऑफ ले लेना डाला आफ्टर शॉक स्टैंड आफ्टर शॉक ऑफ लेके भागा मत जान दे यो ऑफ रीलोडिंग लिया मैं सोचा बात करेगा Let's blow them over. ऑलमोस्ट ऐसा साइड हो जाएगा वैंडल कौन सा राव वैंडल ऑपरेटर इतना कुछ ये नहीं लगा देखता हूँ बाहर इधर खड़ा है क्या ए जाते मेरा अल्ट है साथ में घुसते जैकी का भी कितना बाकी है अभी तो पहला किल हुआ अगर ये पहले इधर डॉक करेगा नहीं वो आएगी मैं इधर क्लोज रखता है उधर एक एंटी फ्लैश किलो फ्लैशर नहीं है ना 2 जन फ्लैशर है नाइस वन अब टू नोडल देख के आएगा वो कोई नहीं है क्लियर है रेनॉल्ड एक अल्ट करूं कोई नहीं प्लांट जैकी वो पे कर दे चल फ्लावर क्लियर है आजा पीछे मेरे को अंदर इसको खेलने रे अंदर से बैक स्टेप राहुल अब किधर है 10 सेकंड ना ये आएगा मेरे शॉटगन 8 इधर रे One enemy remaining. जैकी उधर ऑफ है आ लिया My priority is suffering. मैं वही उठाने जा रहा था तो भाई तो मार कैसे नहीं पाया मेरे को मैं फुल प्लांट ऐसे ही खड़ा था क्लासिक में बोल रहा है तो वो हक दिया उसने अरे मैं फुल प्लांट मतलब हुआ मैं सिलो Keep up. राहुल रेडी रहा नियॉन डायरेक्ट घुसते तू कॅमेऱ्याच्या चक्कर मध्ये मारून जाशील कैमरामैन कोई नहीं Joke's over! You're dead! काय है तो तुला कव्हरला मी थांबतोय इधर क्लोज आएगा वो कुठे कसला कव्हर बोलतोय तू वॉल डाउन है ना तो पिलर के पीछे वॉल डाल दो क्या है उसका खत्म I've got your trail. कर दिखा तेरे नियॉन आई दो बॉल है ना अरे यार 80 राउंड पीके ना ये क्रॉस किया उसने No charges left. है पीछे की स्टार्ट किया फेड 80 थी ये स्काई अरे क्या शायद लिंक के स्काई 80 लिंक हैंड कर रहा हूं मागे कौन था वो पीछे स्काई लिंक है मैंने उसको 40 दिया 40 दिया उसको रन एंड गन करे डायरेक्ट 3 2 1 One enemy remaining. एक इधर शॉटगन अरे ये शॉटगन लेके बैठा है तो आपको दिखा कैसे नहीं वो नहीं वो कॉर्नर पे बैठा था लेफ्ट मतलब ये कॉर्नर पे बैठा था राइट वाले कॉर्नर पे था वहां पे पता मारला नहीं सेव कर छोड़ गया सन वो वैंडल सेव कर वो हरामी शॉटगन लेके बैठा किया है मैं उसको पिछले बार भी वही किया था उसने नहीं आएगा वो आपको ट्राई किल बटन एक किल दे रहा है बस नहीं आएगा वो एंटी किल ले लेता वो साल्या इकडनं मी तुला पूर्ण कव्हर ए लगा वॉल बैंग मागा पळून गेला किधर मार वैंडल दे 140 लगा उसको I need this. इस पे मारा मैं Here. अरे राहुल मी काय बोललो नियॉन इथपर्यंत दोघं आलेले भाई तू मागं पळून गेला लगेच तुला कव्हर साठी मी थांबलोय म्हणजे आई शपथ 2 लोक आहेत कसं हे करणार मी अरे भाई माझ्याकडे पुश करतायत ते दोघं तुझ्याकडे पण पुश करताय ते दोघंचे दोघं मला पिक करत होते आया I'm pissed.
चल चल उसको कवर कर। Spike down. Nice, nice. Spike down. Attacker I got spawn. the spike. ये राल Spike dropped. I got the spike. मेरे को बताना दे लाइक रिवील दे। हाँ इधर जा Reloading. रिवील कर रहा है। I suggest you move. Get out of my way. ये हवा ए हवे में कैसे स्टन हो गया मैं? हाँ ना मैं वही देख रहा था। तेरे नीचे हुआ ना राहुल लवकर फ्लावर मत दे। अरे नहीं अरे यार, Grounded. ये पीछे 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 8 एक आर्ट में और एक अंदर Bring them down. Reloading. One enemy remaining. जा जा आर्ट बीच आ Blocking sight. आर्ट आर्ट पीछे आ जा ज्यादा ही अरे शायद दिखी थी 30 seconds left. नीचे नहीं क्या लगा उधर ही है ना कुछ इन्फॉर्म पता है। ओपन करो हेवन के लिए। हाँ उधर है Spike planted. ओपन है आ गए वो इधर आई हेवन जा तेरे को मिल बीलिंग जाएगी बीलिंग बीलिंग बिलिंग थी वो। तूने आवाज दिया ना फुट का मैं भागने का आवाज दे। नहीं इसने नहीं No charges left. मेरे को एक और चाहिए अल्ट आएगा। शॉट दे दी मैं। एक कर सकते फिर ए जाते क्या अल्ट आएगा। वो ना एक बार ने 90 फ्लैश किया जाके और इधर फ्लैश दे जैसे एक को मारेगा तो नियॉन है। Neon stop. My ult is ready. आ रहे क्या तुम लोग घुस रहा है रुक तू मत कर हाँ वही कर रहा है सब उधर है चल चल अरे कहाँ कहाँ ये? है जैकी चल फिर मैं ये कर रहा था। डिफॉल्ट करना फ्लावर क्लियर है 8 में 8 के लिए भाई 8 के लिए कर रहा हूँ पीछे आ जा ना जैकी राहुल पीछे आ जैकी ये दोनों स्पॉन से आएंगे लग रहा है अभी। नहीं सर है ना राहुल है उनके उनके पकड़ डॉक कर रहा हार्ड से डॉक कर रहा। Right there. राहुल फ्लावर तुझ्यासाठी One enemy remaining. ओ भाई राहुल यार हटता है इसको रुको मेरे सामने हो। काट घूम गया अभी क्या टाइमिंग है वो बंदा। वो ऐसा ना फ्लैश करके ऐसे घूमते हैं ना वो ऐसा घूम गया। Reloading. जो फुल शील्ड नहीं था वो मेरा में मरता। बी पे करूँ यहाँ से कर सकता हूँ बी पे जाएगा क्या जाएगा हाँ यहाँ से हाँ कर सकता हूँ नहीं इधर से करो इधर तक Here. हाफ होगा खाली नको इधर आगे आगे करो। तो फायदा ही क्या हाँ करेगा तो साइड में आगे करो Here. फ्लैश कर सीधा। जैकी Flash out. क्लोज रहेगा Where are you? रेबल दे रहा है Marked one. और मैं Grounded. Bring them down. दे प्लांट Blocking sight. वो प्रेस करके दे दीवार को ऐसे कर क्योंकि वो डिफ्यूज को बैठेगा तो वो एक ही एंगल पे डिफ्यूज कर सकता है वो पीछे No charges left. उधर ये प्रिपेयर है फंसेगा वो। गन लेके बैठा रहेगा वो फिनिक्स। पीछे देख रोहित मेरे इधर ब्लाइंड एक सीटी कैसा आ रहा है ये बेटर रहेगा कॉर्नर रुक One enemy remaining. ये उधर ही बेटर रहेगा चलो टर्न हुआ है वो।
फास्ट भागो। वोटर Make them feel your इधर weapon. बैठा था वो। Right there. Or use a gun. Whichever. क्या गेम प्ले खेल रहे हैं? अल्ट है। नहीं। फ्री किल। वो डायरेक्ट सभी पता है ये करती है, नाइफ लेके आ रही है डायरेक्ट। अभी क्या कर थ्रो कर रही है कि क्या कर रही है पता नहीं। फ्री किल किसको चाहिए? फ्री किल्स किसको चाहिए? और ऐसे भी नहीं कि मैं अलग मार रहा है, वही एंगल से पार आ ही रहे। नहीं क्रॉस नहीं की। नाइस रिवील दे रहा है मैं। अल्ट मार रहा है मैं। I've got your trail. थोड़ा हो जाओ अरे मैं दिखाई Enemy kill. यस सिटी शॉटगन। जल्दी मेरे को कवर देना। कोई तो मिस किया उसके ऊपर उधर से। ओके 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 Enemy remaining. दोनों ने हागा। भाई बुलेट संपले भाई। है ना फ्लैरी? एक डाल के रखवा आई। क्या डैमेज दिया गया? एक तो गोली मारा क्या दोनों ने? 40 क्लोज है वो। आई इधर ही लेफ्ट। ऑलरेडी लेफ्ट में हो। नाइस। Something done right? Do it yourself. My ultimate is ready. Last round before the switch. मेरे को पता है जन वो इधर आई तेरे ऊपर स्मोक डाला तभी देखी। नहीं एल्डर फ्लेम दो। हाँ वही मैं भी वही ले रहा हूँ। I need this. My thanks. मैं भी ये ले। क्या जज? वैंडल दे रहा हूँ। I need गाड़ी my दे रहा। thanks. गार्डियन दे उसको। 84 खाया तो वो फिर भी मैं मिड से आता हूँ इस बार। दे होली शिट मेरे को हेडशॉट मारा। अल्ट है क्या? तेरा मार। Blocking sight. Enemy remaining. Spike down B. फिनिक्स इधर है। लिंक है। तीनों लिंक है। तीनों लिंक के मतलब? अरे तीनों लिंक थे भाई। तीनों एक ही जन तो बचा है। तीनों लिंक थे। Switching sides. स्काई गाली देती रही थी वो दोनों को। इधर खड़ी रह के डाउन कर रही थी। जेट का भी ध्यान नहीं, जिसका भी ध्यान नहीं। अरे हाँ इधर आओ आर्ट में आओ। इधर कनेक्टर में आओ। मेरे को किसको बोल रहा है? सभी इधर आके ना क्राउच करके ये वाला केबल देखो। ये वाला केबल और ये वाला लाइन है देखो। दोनों जिधर इंटरसेक्ट हो रहा है ना उधर ये डाल स्मोक क्राउच करके। आपको नहीं बोल रहा है। अरे उसको ही बोल रहा है मैं। डॉट क्या? कौन सा क्रॉस हेयर का डॉट क्या? हाँ दोनों इंटरसेक्ट होते हैं देखो क्राउच करके। अरे ये वायर और ये लाइन इंटरसेक्ट होता है ना ऐसा। इधर प्लस बन रहा है ना उनका उधर डालो। ओ थोड़ा अच्छा 1 में क्या? 3 घुस गए बाय। 78 फिनिक्स इधर लग रहा है। दो हेड। बी मुझे 2 हेड दिया उसने पर 78 बेटा उसको। गंदा मारा मेरे को देखने भी दीजिए। स्लाइड बीडी करके आया ना वो। इधर आए इधर से मारो। Last player standing. No more dreams. काय डैमेज ना ही आया। ये कौन है आपका? पीछे क्राउच वनान क्राउच की वजह से ही मरा ये। उसको बॉडी लगा। We get a pick. We move in. Got it? राहुल कोणतं ते घुसले तर साइडला मेल्याच्या नंतरला आपण समजला आले। राहुल बहुत काम कर रहे थे। मेरे को तो आवाज नहीं आया तुम लोग। मैं बोल लो ये बोल लो है का
काय बोललेला मेल्यानंतर बी नाही आधीच मेल्यानंतरला बोललो आवाज बोलला आला तू. त्याच्यानंतरच बोललेला मी आम्ही नाही मेल्यानंतर मी काय बोललोच ना बोललो 78 मारला आ गए बी Yikes. शॉट Oops. फिनिक्स ए बी से आएगा लर्क करके ओ नहीं इधर है 1 दिया हेडशॉट दिया हमें अभी नहीं कूद के आएगा लिंक आएगा जैकी रोटेट कर रहे हैं आग दिया नाइस ए मेन राहुल जा राहुल ले जा दोनों जाओ राहुल जाओ क्या दोनों जाओ हो गया ना भाई मार्शल भी ले लो मेरा उधर ले लिया राहुल टैग करो लॉल पीछे चला गया वॉल है आपके पास राहुल जा एक मिनट एंट्री मारे हम लोग अब तक पीछे ही। निकल गए वो लोग तो ही ना पीछे ही है ना एंट्री नहीं मारे एंट्री मारा था वो रिटर्न चला गया अरे तो डॉक कर तुम्हें बोल रहा क्या आपका पार्ट किया है छी यार 30 seconds left. कोई तो सना ना पीर के अरे हे ना भाई नाही आहे टाइम अरे हे सांगतोय बी जावा एकदा तू टाइम नहीं है 25 सेकंड है भाई तो आरामात जाऊ शकतो ठीक है हो रहा प्लान 10 seconds left. Spike planted. Last player standing. लेट आया ये मां का एक बैक साइड गया ना कम ऑन राहुल यार वन कितना मारा रोहित आपने उसको 30 हेलो यार 15 एचपी हील लिया है ना तो 15 एचपी One enemy remaining. ओपन लो लिंक है हाथ पे केज चलो स्टिक करो Cage triggered. लिंके करो रिलोड कर रहे हैं लॉल Clutch. Hello, Cypher. There is no hiding. जेटफुल टिल्ट हो गया रहेगा गार्डियन दे Anyone have funds to spare? अभी करके देखो बंदे वाला मैं रुक रहा है उधर बी तेरा ये क्या है रेजोल्यूशन नॉर्मल नेटिव बराबर इधर Here. पिन किया है बी उधर ही थोड़ा कुछ तो हो रहा है ट्राई करते हैं अपन बाद पे में है एक बंदा आओ जो मैं हॉल्स छुपा पिक नहीं ले रहा है इधर में हॉल्स मेरे को खाली बता ना क्रॉस हुआ जाके उधर रहेगा देख कोई तो लॉक कर एक बंदा आए जेट खाली एक और है कोई तो तू स्काई भी है मैं नहीं जेट दिखी मेरे को खाली स्काई ने फ्लैश किया वो भी देखी ना नहीं वो नहीं थी अरे फ्लैश किया तो वो भी है ना इधर ही हां भागते ही वो बोल रहा हूं मैं एक तो पास नहीं बन Blocking sight. Reloading. नाइस Spike down mid. क्या हुआ दिखा था ना तेरे को वो शॉटगन अच्छा Find you. वही One बोला, time में क्या कर रहा है तू कब का मार दिया तो गन पास शॉटगन लेके भाग रहा था ना 30 seconds left. ये पे है आए आया केज खोल के मारो ना One enemy remaining. स्पाइक डाउन Spike down A. सक डालो एमएन सक डालो सक सॉरी मैं सॉरी स्पॉन 10 seconds left. सेव करेगा मारो उसको Match point. गाड़ी दे डैमेज होती क्या तू Anyone have funds to spare? Thank you. मैं उधर ही डाल रहा
ऑडियो क्वालिटी है ना पक्का? हाँ क्राउच के वो 2-3 राउंड डाल रहा था इसके लिए मेरे को याद हो गया। आगे भी घुस गए पूरा। वो फुट का वेट किया वो पूरा। ठीक है 2 मिनट है देखिए और सब मिड क्या नुबड़ा कॉल लेता है बेंचोर देखा सब मिड है बोलता है बी घुस गए बंदे। भाई पागल है क्या सब पूछ के पाया मेरे को। ठीक है मतलब मिड में चूतिया लोग है ना। ऊपर Bring them down. जैकी तो कितने जन मिड में देखा पता मेरे को? अल्ट मार रहे थे अल्ट मार 2 तो हाँ ना केला मेरा आप बोले घुस गया तो मरे मिड में सब। One enemy remaining. जट अकेला भी मेन था बस। ये देख 2 रुपए का कॉल 1 वे आपका भूल गए क्या? ओपन क्यों नहीं कर रहे हो? पीछे गए स्पाइक नहीं इधर ही है। इधर है। ये देख नो कर रहे एकदम। Defenders win. We won. छी They lost. ऐसे अच्छा पुलिस कॉल देता है तो खेल उसके साथ भी। पीता ही उसके दूर तो भी घुस गए। चलो बाय बाय टट्टी पिक कर रहा है मैं आपको। मैं भी जा रहा नहीं हो नहीं है बाहर जा रहा है बोला था पहले। अरे जामिया को सुलाने क्या इससे बात कर रहा है? For Windows, if you have a Windows, obviously, just extract this option right here. This will extract everything which is in a folder, and this will be supported in OBS. After you wanna go to plugin. Look at गया ना किधर पर? These 2 files you wanna copy, just like this. अच्छा पूरा Go गया to where you downloaded OBS, which usually is in program इधर files, गए OBS Studio, and paste this in. ये तो बाहर जा रहा है ले ही निकल गया। Obviously, I can't paste it right now because I'm recording with my OBS, Match so found. I'm just gonna pretend I pasted it. Now, I recommend to just make a folder and बहुत है प्रायोरिटी अनरेटेड बन गया प्रो। ठीक है जट जिले के पेट तो देखा मैं छूते ऐसा एक जगह क्या नाम मेरे को बराबर याद है लोडू तेल लेने का सोचो। क्या बोलूं टीम तो आजकल कोई लेता ही नहीं है। So what is that? Chính trái thỏa Banana I'll show you how to play Phoenix साला जज लेके कैम कर और मेरे को बोलता ट्राई फिनिक्स बोला हाँ फिनिक्स आया था mouse, I guess, if that's what बोलता ट्राई अनरेटेड बन गया प्रो टीम का अच्छा तू लिखा SD. So if I click on this is the thing that I'm gonna use, and पता नहीं 8-bit गोल्डी I know
all your tricks, Wind Girl. You're not faster than me. Wind girl. No charges left. slow. Let's go B. Well done. I can get inside quite quick. अच्छा ऐसा क्या करने वाला है? लगता है पिछले मैच में मिले थे इसको। क्या? पिछले मैच में मिल गए थे। मेरे को ये फ्रेंजी ब्रिमस्टोन भारी लगता है। ब्रिमस्टोन का किसका है ये? ऊपर नहीं तोड़ पाए हो। Enemy spotted B. अक्सर देखने को कोई नहीं है। वो भाई आजू में ही है। 2 रुपए का वॉल करेगा तो ऐसे ही होएगा ना। Last player standing. Well done. नाइस वॉल हार्बर। Alvida. ओ भाई क्या देख लिया? रंगोली बना रहा है। जेट देख क्या किया? कनेक्ट। Now I know how annoying my healing can be. क्लाउड बस लेना भूल गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। 120 दिया तो हील नहीं है क्या उसके लिए? इसको लगा सब एक ही झटके में दिया और इसने पहला डैमेज दिया रहेगा बॉल थ्रू किधर तो। Scanning ahead. Enemy spotted A. Healing. माँ का इधर से अच्छा मारा उधर से मारे। यो शूट। यार खत्म कर जाओ। जाना घुसना जाए पी किधर तो। हाँ ना घुसना मार दे तो मर। चलेगा ये। या वन टैप मार दो जन को टाप टाप। देखा एक हार्ड लेफ्ट है चेंबर है हार्ड लेफ्ट। ऑब्वियसली तू मारने जाएगा तो ये होगा वो। रिलैक्स नहीं मारना चाहिए था, मेरे को पता नहीं था गार्ड। तो बोल रहा तो मैं हार्ड लेफ्ट में तेरे। हाउ डू यू रन एंड हिट हेडशॉट्स? लॉल हैक से 30 seconds left. इसी हार्बर खेल ये खुद के वॉल के वैसे इतना डैमेज मिला इसको। खुद के वॉल के वजह से स्लो हो गया वो। Last player standing. Spike down A. Ouch. 10 seconds left. अच्छा ये बोल रहा था ऐसा जाएगा करके अटैक से अंदर। Ultimate मार ready. गया ठीक है चैट। इधर से रिवील होता है क्या? इधर से एक रिवील जाना पड़ता को। Right here. Stay. Track them down. Hello. Watch your eyes. I'll take point. देखता जाता है। Flash. Rotating. जेट है बस शायद। Weapon here. वही आ गया शायद साइड हो। ऊपर पार्ट पे शायद। Last player standing. No more. क्लोज। अबे शूट क्यों नहीं हुआ? बस भी यही होगा, कुछ नहीं।
This is crazy. It feels like we've been doing this forever. Anyone else feel like that? It's me? Okay. आया क्या ये? Well done. Let's crack them open. Yes. Scanning ahead. There they are. Reloading. Careful here. Watch your eyes. A spike down. Spike down mid. Full flash में headshot. I had the spike. That is VALORANT. क्या? भाई इसको शूट ही नहीं कर रहा है कोई. क्या था? भाई किसने देखा क्या? उससे मैं फुल ब्लाइंड मरा, मेरे को उसको देखना भी नहीं है अभी. अच्छा ओनली मार्शल किल राइट. अरे उसको शूट ही नहीं कर रहे कोई इसको. वो सुबह सामने आके खड़ा है, इसको स्कोप कोई भी खड़ा था. जा ये जा, इधर 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 को दिखेगा, चेंबर रहेगा इधर शायद. ट्रेन उधर थी बी में. इधर ही रहेगा बाजू में. साइड भी देख लेगा. 30 seconds left. हेल्थ चेक कर और बैक साइड ब्लाइंड कर दो. मेन छोड़ दे. वो तोड़ दे और बैक साइड ब्लाइंड. एक और छोड़ आ गया. Light planted. हेवन वॉल कर दो चाहिए था. ये देख मेन पे ही है. मेन पे. यो उसको समझ में नहीं आता. AFK मार उसको जाके. हर बार एमएन. Last player standing. देखा नहीं गया राउंड. AFK. One enemy remaining. एमएन. हर क्यों लिया इसने? Clutch. फिर भी नहीं मार. हर बार क्यों लिया? मतलब इसने अल्ट मारा है तो समझ में नहीं आता. Yeah, let's bring it back. Comments. स्लो गेम. Stay in the moment. स्लो गेम. सीएस वाला आदमी है, ऐसा क्यों लग रहा है? Spike dropped. Revealing area. Going up. Flash. Holy shit. बाइक किधर है? Healer down. Well done. Well carrying spike. ओ भाई ऊपर आ गया. What the fuck man? For you. भाई ओपन क्यों किया उसने? Watch your eyes. Careful now. Get out of my way! My ultimate's ready. Careful now. Fire in the hole! One enemy remaining. Triple baby. AFK जा मार. ये भी AFK गया क्या? इतना AFK क्यों जा रहा है? सर्वर का इशू है क्या? ये हिला एकदम को लगा, पता है क्या? Look at me.
and know that I am by your side. गाड़ियाँ दे Need a drop. रेंज फिनिक्स Speak up if you need a gun. तुम करे तो ओपी, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। As one. आई कैन कम बूम बॉट रिकॉन कॉम्बो। रुको रुको आगे मत करो रिकॉन रुको। कॉम्बो है उनका। एक मार्केट है। करो अभी। I got the spike. Come on, let's go! Flash! Here. Scouts down. रेस साइड रहेगा। ना साइड क्लियर है Watch your eyes! Sorry, bro. Reloading. गेट के पास है। तो देख लिया रोहन उसने मैप से। One enemy remaining. मारो कि नहीं मार दे। They were not good enough. पीछे से 2 जन आ रहे थे किल लेने को। Hello. We got this. क्या तुम्हारा इतना इजीली टिल्ट हो जाते हैं लोग। शॉटगन कर रही क्रिंज फिनिक्स यू गेट अ लाइफ। ओडिन करे तो भी प्रॉब्लम होएगा इन लोगों को, शॉटगन करेगा तो भी प्रॉब्लम आएगा। Yes. अब ओडी ले लिया वो लोग My ult's ready. भाई भी मरो भाई नूब चैट साले स्मोक डाला उसने उधर। आओ कैसा जिंदा है वापस। अगुल सीधा वॉल करके उठा। सोच रहा हूँ मैं रुक जा नाइस। Enemy spotted A. Last player standing. मैंने उसको 125 दिया पर हम मरा कैसा नहीं इतना ये सब करके। हाँ ना। We are strong because हग we दिया are और together. सब। Don't forget that. मेरे पे डैश करके गया वो साइड। Spun that. अरे रिप्लाई मत दे। अरे इग्नोर करो, खुद से टिल्ट हो जाएंगे और इग्नोर किया तो ठीक है Let us hunt. ये क्या है सब कम डाउन। Enemy spotted mid. Watch your eyes! ये जिसको रिवाइव दे सकता था उसको भी मर गया हाँ आ गया रे भैया। मैं भी जिगल पिक करने गया था। Going up. लेफ्ट है गार्डन पे Plant the spike. फ्री One enemy remaining. Last player standing. जट देख रहा कितना लगा मेरा 127 पे था। बर्ड शॉट मार दो। मैंने ये आवाज दिया क्या? हाँ उधर ही ऊपर ही है। नहीं वो साइड है वो साइड। हाँ ये उसको नहीं पता, चढ़ के जाओ ना कभी इधर से। मैं भी वही बोल रहा था तो पता ही नहीं है ओके शॉट डाउन जल्दी। नहीं दवाई नहीं मिशन में था। हाँ What will it be this मैं time? हेड मारा उसको शॉटगन से 120 लगा उसको। वो कितना क्लोज था मैं उसके। दे गार्डियन दे ये हाँ इसको ड्रॉप दे भाई दिया ओनली मार्शल करेंगे वो भी पैसा दे दे We go. तो जिगल करेगा। What's this? मारेगा ले Come on, let's go!
मेरे पीछे नूब है क्या? जेड नूब है क्या? Get out of my way. Careful now. Nowhere to run. ये क्यों डाला कुछ पता है? One enemy remaining. Loosen up. It's only life or death. भाई जेट और ये लोग साथ में खेल रहे पक्का। अरे भाई सी एबिलिटी डाल रहा है कुछ भी, उसको नहीं आता कहते। भाई अच्छा खासा देखा, अचानक वो स्मोक आया मेरे अल्ट कहां से आया वो वो भी आईसी नहीं समझा। कुछ भी डाल रहा है तो उसका वॉल देखना, आईसी कर रहा है, नहीं आता उसको खेलने। तो कहां से आया वो भी नहीं दिखा। हेवन से डॉज तीनों हेवन थे तीनों। सॉरी माय फ्रेंड। किधर गिरा? Careful now. ये क्या होगा? Embarrassing. Walls up. Plant the spike. रुक जा। Wave crashing. Flash. On eyes here. हेवन है क्या कोई? Barrier created. किधर है लोग? वाह अभी आया। Wave crashing. मैदान तेरे लिए क्लासिक लेके क्यों जा रहा है शॉटगन के सामने? One enemy remaining. भाई इसके ऊपर हग रहे। No charge. एरस लेके बैक स्टैप नहीं मारा उसको। बहुत जल्दी के तरफ दिख रहा है। शॉट डाल। Shot that. No more to oppose us. Last player standing. Well done. Just let them try to catch me. जज का स्किन है ना? देख मैं भी छोड़ता हूँ। I need a drop. Cheers. आई तो रिकॉर्ड हुआ नहीं, मतलब उधर ही भागा रहेगा। शेम बड़ा साला। Right here. Speak up if you need a gun. Ready. इधर से मार। अरे इधर से ट्री पे मारो। इधर आ और ये ट्री पे। Hey. ट्री पे। हाँ। Scanning ahead. कौन से ट्री पे मारे? Watch your eyes. One enemy remaining. क्या है मेरा पनौती मेरा ये शॉटगन। मार उसको रिलोड हो रहा है। क्लोज है। पर टी बैक कर साले। बॉडी शूट कर। Last round in the half. Buy all you need. चेंबर गया। Speak up if you need a gun. Flash. बक्की से वो रेंज से मारा हो। ठीक है भैया, अनइंस्टॉल करने का टाइम आ गया मेरा। दोनों अरे शॉटगन बकी वॉल पे दे क्रॉस वाला। One enemy remaining. Last player standing. वॉल पर उठा। ये स्पाइक से भरे। Wall raised. Your duty is not over. Last player standing. You can do that too. Spike down A. Careful now. Going up.
Oh, come on, let's go! My ultimate's ready. Switching sides. Phoenix, you're supposed to be वो all. बड़ा What the hell happened? प्रे कर रहा है। बड़े वॉल का हो उनके पास हाफ शेड रहेगा लगता है। है ना एफके है ना। जेट जेट ए लोड अच्छा इसका ये नहीं है माइक का नहीं है। Oops. Gun here. Flash! Careful now. एक मिनट बूमर तोड़ा क्या तू खुद? नहीं टूटा अपने आप। पैसा मालिक से फ्लैश नहीं है कुछ मेरे पास किया है। अरे जा जैकी। Last player standing. What the hell was that जैकी? वो दोनों मेरे को भी Occupational hazards aside, I do love how much we travel. Was not expecting this. No charges left. ये इसका नेट कितना डैमेज देता है फुल? Try not to get shot, okay? क्या है? मार Spike down. 130 जेट 130 Get out of my way. One enemy remaining. मिड देख Healing you. अंदर एचपी पार्ट खोल दिया उसने। Well done. रिटर्न क्या है? अपड्राफ्ट मॉन्टैप नहीं Water rising. क्या था? यो सांप सीढ़ी खेल रहा है बंदा। क्लासिक नहीं करना चाहिए। क्या छोड़ कब सोई तो यार भी लगता है गया है उसको लग रहा है पता है उन लोग हक रहे हैं इसको। वो तक सिटी में दिखा इसको। दिखा उसने भी देखा। Right there. 30 seconds left. अरे स्पाइक के पास क्यों नहीं था? स्पाइक किधर है? अरे माँ स्पाइक डाउन हुआ था ना इधर। अभी वो हेवन से साइड कूदेगा। आर्मर मरेगा मोस्टली। Ten seconds left. Last player standing. 20 HP जाकी हो। टाइम जाकी 20 HP हो। मार उसको मेरे को नहीं मारेगा। 22 दिया मैंने उसको और तू बोल रहा है 20 HP है वो। It's just as dangerous as your weapon. अच्छा बगा हीलर को मार दिया था मैं उसको। नहीं हीलर दूसरा कोई तो मारा उसको फटक। एक मिनट रुको 123 प्लस 22 कितना हुआ? ओ 5 HP बचा हो शायद। बराबर ना? 5 हाँ 5 से कर ठीक है। 5 HP के लिए बच गए। ड्रोन के साथ बॉम्बॉट आया मेरे पे। क्या क्या करूं मैं? Spike planted. ए वॉल क्या? मेन पे वॉल क्या? ऊपर। Last player standing.
standing. नीचे कूदा सिटी कह रहे ओ रन एंड गन जैसे वॉल बैंग की तरफ से वॉल बैंग Okay, 67 we know the पड़ा drill. Stick to your roles and we'll crush it. वॉल सब तो क्या सीरियस खेलेगा यार एक राउंड इको करना है मस्ती मिले रिलार्ड में आ रहे हैं लोग अभी रिकॉन थोड़ा बूमबॉट थोड़ा ड्रोन थोड़ा रेडी Come into the unknown. 3 तोड़ा उतने में मर गया Scanning ahead. Careful now. हाँ उसने मेरे को वॉल बैंग पड़ा ये मेरी फ्री Fire in the hole! मेन आया घुस गए अंदर $50 मारा हाँ 50 साइड में 50 रिकॉन आएगा 5 One सेकंड enemy remaining. यो मर रहा क्यों नहीं Player standing. कितना किया था 78 दिया मैं उसको सनील आपने कितना दिया Watch their movement. Study their नहीं मेरा patterns. लगा ही नहीं Exploit whatever you can. 46 + 70 कितना दिया 130 130 हाँ। मैं बोला उसने मारा इतना ठीक है गोली खत्म हो गया लेकिन वो घुस गया उस पे ये हर बार ने हक दिया ना एक भी नहीं मारा मेरे पास वो ये था ना मेरे सामने वॉल था हाँ वो आपको तो बोला था ये रिकॉन आएगा तूने हक दिया ये क्या होता है वही पूछा ये क्या हो गया देख रहा तू मेन देख ले कोई आया तो बता भाई बीमेन आ रहे एक ही बीमेन स्लॉट डाले रिकॉन थोड़ा उसका ड्रो तो ये थ्रो कर रहा है और बोलते हैं, ये क्या हो गया वो क्या हो गया बीमेन है हाँ जिस मंदर आंदे एक दो है। लगा नहीं एक भी नहीं लगा अपने स्टेयर्स से आया जाके क्रॉस किया हो अरे मेरे Last को दे player standing. अबे यार तो सैचल मार के और साइड गए तो बता देता मेरे को फिर नहीं फोकस होना नहीं थी और नेट के चक्कर वो मेरे पे नेट डाला शॉट डाला सब डाला उस डर गए यार स्टेयर से आए लेन से दोनों एक साथ आ पता है Even with numbers, anything can still happen. कर दे बेंच सरेंडर करना था क्या मैंने नहीं किया हल्के ऐसा हो रहा माइंड के जैसा नींद आ गया मेरे को वापस मैं ऐड कर लेंगे अंदर आ रहे ही नहीं है कोई तो वाला है तो चेक तो होल्ड कर रहा तुम भी होल्ड करते भाई Come on, let's go. लंडे को क्यों पीट Watch your रहे hands. बी No charges left. भी आगे भाई ये बंद किसने किया अगर Spike planted. क्या सीन क्या है One enemy remaining. ये बंद करते दिखाई नहीं मिलता Careful now. क्या बोल रहे हो क्या हुआ चुप जा बेटा साइड पे जाओ ना तो मार गया हट के Ready to stretch your wings? इधर ही उछल रहा है
मेरे को लगा कोई मार्केट से आ, इसलिए मैं मार्केट खोला, फिर देखा तुम लोग सिटी से आ गए। चेक शील्ड भी नहीं दे रहा आप। Water rising. Fire in the hole! भाई नहीं नहीं। Let's turn the tide. Spike planted. किधर बॉक्स किधर छुपा है? One enemy remaining. ये वॉलबैंक क्यों नहीं किया है? इतना दिख रहा है तो उसका। उसके पास ये Careful now. अच्छा फिर नहीं दिखा था हाँ ना, दिखा नहीं ना वो। नहीं है वेट Disaster averted. You want me serious? You got it. एक और AFK चला गया। ए भाई देना। Someone get this. Thank you. बेटा Here. Watching here. Here. Fight! Get out of my way! Just ground. My ultimate is ready. बेटा नहीं Target B. Nowhere to run! जा रहे वो दोनों मिड है Well done. दोनों मिड है। एक कोटा ले। कर रहा हूँ जेट को नहीं उठा सकता मैं। गया अंदर। Your duty is not over! Spike planted. साल्टी For you. इसको अभी जस्ट पिछले साल का आया था ना अभी। तो लोग और भी ले रहे हैं ना और Revealing area. वॉलबैंकर Reloading. फ्लोर पे ही पलट गया। Shield going up. Target A. Last player standing. One enemy remaining. मेन है? लॉल क्यों मिला? ठीक है यार, ठीक है वैलोरेंट। Anyone dehydrated? Ace Need a उसको quick कैसे rinse? मिला पहली Just बार? checking. पहले जेट मैंने मारा। अरे नहीं सामने लेके मिला ना एस। अबे सोवा को एस कैसे मिला? मेरे बात हुए। मेरी मारा बात सही है। मैं किससे मारा? मैं रेस से मारा। उसको 4K मिला। 5 मिला। हार्बर को मिला 5 मिला और मारा मेरे को इसने। क्या? और देखो पहले किसने मारा था? सबसे पहले इसने ही, क्या बोलता है उसका नाम? तो बस कर रहा है। Target A. चूतिया जेट। इनका रिवाइव लगा। तूने स्लॉट डाला था क्या जाके भी में? हाँ डाला था मैंने। जा रहे हो हम लोग।
मेरे बहुत चुपा करके अंदर फ्यूचर ट्राई कर दूँ। Here. 30 seconds left. उसका वेव उधर रुक गया। Careful now. Spike planted. One enemy remaining. Blocking fire. ए अंदर है ना। Healing you. Now we side with relief. Show me where to go. विमेन निकाल दो। मैं स्लो में डाल देता हूँ। पीछे डाल दो ना। तो नीचे आगे पीछे Here. Try not to get shot, okay? Revealing area. Found them. ओके दोनों 100 है। ओके रेज और वापस उधर ही खड़ा है साले, नेट आता है पता चल। रेज और सोल है, बाकी दोनों लोग हैं। One enemy remaining. चूतिया है क्या? मुझे वॉल तेरे रिवर्स छोड़ ही नहीं हुआ मेरे को। रिवर्स लो 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 वॉल बैंकर बॉक्स नहीं है। तोड़ ना, क्या कर रहा है तू? इतना स्लो। मेरी एक तो मेरा बहुत अटक रहा है। Water rising. ये वॉल पहले देने को नहीं आया क्या इसको? क्या करता था? Spike planted. ये कार्ड कैसे टूटा इसके वॉल से? इसका वॉल इसको कवर दे रहा है, उसको बंदे को कवर दे रहा है वो इसका। कर रहा है तू तेरे को। इसका बॉडी दिखा था ना? केप दिखा मेरे को उसका। They think they're the best until we prove them wrong. ये गेम खेलते हैं। पार्टी पे क्यों बोल रहा है? जेट तो थ्रो ही कर रहा है, ऐसा लग रहा है। मैं जा रहा है लूडो खेलने। हैं? लूडो खेलने जा रहा हूँ। संटाल आ गया। मैं इसका खर्च नहीं कर रहा। Target mid. Careful now. Reloading. Nowhere to run! Come on, let's go! Shut that. Spike down mid. One enemy remaining. हट जा गिरो, मैं फ्लैश देता उसको। फ्लैश दे रहा मैं। फ्लैश के बिना ही मर गया। अरे मेरा बॉडी ऐसा आधा खड़े के खड़ा था। Match point. तो हो जाता है, इसलिए मैं नहीं किया। They're desperate. नहीं अरे कितना उसके बाजू में घूम रहा हूँ फिर भी उसको नहीं दिख रहा है। मेरे पे ऑफ नहीं चाहिए। पूरा ऑफ करना। मैं मेन पे वॉल करके बैठता हूँ। वाइड स्विंग लेते हैं जेट? क्लोज क्या स्विंग लेते हैं। वो मैप पे दिख रहा ही नहीं, वो रिकॉन के पहले भाग जाते हो। या स्मोक करता है शायद वो रिकॉन। Get out of my way. Flash. Fire in the hole. कितनी एवन मारेगा वो। हट जाओ। Flooding them. Spike planted. One enemy remaining. ठीक है चैट, एक्रोबैटिक्स कर ले। जाके उतर। My
ult is ready. It is over. Defenders win. Okay, that is done. करना का क्या था हमें बेचारा कर जा रहा हूँ किसी खाना खाने फ्रंटल फ्रंटल भाई ये झाड़ू वाला बड़ी क्यों ले रहे हैं ये लोग एक और पक्ष झाड़ू वाला भाई लग इसी रहा है देख के If there ever was a time, Knight Rider, wake up, my friend, because this is your moment of calling. There's slight change in composition too from what Remnant may expect. Gozern actually, the last time they played out the Ascend, they used to play the Sage composition instead of the Killjoy. But before coming through on the Killjoy, I particularly like because I know it's one of his personal favorite agents. So comfort all the way through for God's Reign. And Knight Rider, like you said, back on not just an agent where he might feel comfortable, but on a play style, right? He gets to play with that op, play a lot more aggressive rather than play the Killjoy where he has to play behind his utility. And we saw that Knight Rider yesterday popping the heck off. He was the sole individual who truly did awaken in that fracture matchup, dismantling everybody who stood up against him. And right now he has a lot to prove because there's one tap god on his iconic jet. So I'm expecting nothing less than a derby on this map too, man. It's gonna be a very, very close neck-to-neck affair because we've already seen what One Tap God brings to the table on Icebox, right? Man did not relent for a single round. He was on fumes from the get-go. So that's what we can expect from his jet. Knight Rider, though, this is gonna be the hallmark of experience and championship DNA. The ability to bounce right back after such a dominating loss. There's no better storyline written for this individual. 100%. And look, one way or another, God's Reign, they have to make their stand here. Either they bow out in not so spectacular fashion or they pull off the most insane comeback. But either ways, I think what we can expect is a blockbuster of a match. So heading into Ascent, we're going to get to see the side of God's Reign on the attack and Revenant on the defense. And it all comes back to those crucial players. My eyes especially on Josh S. He is going to be playing that Killjoy, I believe, so doesn't necessarily get to play on that op role, but we've seen him be proficient as ever on multiple different roles. And if he can pick up an op on Phoenix, he can pick up an op on Killjoy. Any time of the day, man. Especially considering the way this man has been playing across his agent pool, I feel like he truly does embody a very, very significant flex player. He's been a very demonic presence on the server, and it truly feels like this dynamic duo is panning out really well for Revenant, right? There's Josh S. Ching duo where they've been very, very good with not only how this entire squad has been able to really resurge themselves in terms of individual performance. Because you think about these players, Wimp, Blackhawk, One Tap God, 6 months ago, right? One Tap God, if I'm not mistaken, was Sai's teammate in True Rippers. And True Rippers, sure, they did have a decent run in the South Asian scene, but they were never able to surpass expectations. And hey, with the way Wimp and Blackhawk had that 2022 season in Revenant, they got their exposure, their first time at LAN. They went to some of the bigger events that they weren't accustomed to in their squads prior. So they've been facing off stiffer oppositions. They've been fighting really well against those stiff oppositions, truly making a name for Revenant. And hey, with this roster unified with the likes of Paradox, which we will get to witness if Revenant make it to that finale stage, it's going to make the perfect representative for South Asia, especially considering they're going to be joining VLT. 100%. But hey,
Of course, we have to find out which team actually heads there. Revenant, like you said, they are in the driver's seat. They've got the ball in their hands. They just got to make the shot and make it happen. They've got that one chance heading into Ascent, and we'll have to see how they're able to push all the way through. Because I'm sure God's Reign, they will not drop down without a fight. God's Reign likely to give it their all, and that's what we are here ready to witness. But of course, before we start off any match, we've got to pray to the Valorant gods. We've got to give our due reserve to the Valorant gods. We've got to follow tradition, and that comes in the form of some minor technical issues for the players. Well, we hope that they get resolved quick. From what I'm being told, it's something really minor. So, what Yeah. at the max, maybe 2 minutes. So, that's Yeah. nothing in the context of this matchup now, which is going to be heated. And hey, still could go the distance, right? Both of us wanted this to go to a complete three mapper because Bind's going to be an absolute blockbuster to end this entire story off with. Considering both these teams' performance on Bind, it's something that you certainly at home need to look out for, ladies and gentlemen. This entire day is gonna be a fun thing, man. The last day of this league stage where it's been nothing but fun, right? This playoffs, the entire upper brackets were a thrill to witness. The lower bracket runs, we truly got to see teams like Reckoning, like One Chance, like God's Reign make a name and make a narrative for themselves. And sure, the narrative for those few teams might have ended, and that's what these two teams are fighting off against, for their narrative to continue and for them to continue to live on to fight in the Pentapro series. And look, that fight is what we want to witness. That desire almost within these particular players, the yearning to be at the top and to be the very best. They've got to show that fight today. They've got to show that within themselves, they've got this innate ability, not just to reset, not just to recalibrate, but more importantly, bounce back stronger, just like a lion would when their backs are against the wall. God's Reign, they've got to live up to their very name. But I think one thing that we can expect from Revenant is once they're in control, they're not a team to easily let it go. So this again, the starting aspects of these maps so crucial because the team that gets that piss. So we've seen so many bonus go the other way where the buy does not work out and it all falls apart in that particular round. Those bonuses can be so damn crucial if a team plays them the right way. True, man. The one player that I'm really excited to even have, I've had the opportunity to interview was Excali. That's again for this tournament. So that's something that you'll have to stick around a little later for this stream. If I'm not wrong, after the next matchup, we might have it. I mean, if you really do want it, let us know in chat. But one thing that, we did get to learn from Excali is the fact that to reach the top, to reach the absolute pinnacle of even in the sense SEA Valorant, you need to go through a lot of those losses, because unless you lose you don't learn, unless you learn you don't go ahead, and unless you go ahead you don't become the best, right? So it takes a lot of losses for you to then take a chance at success, because in the road of success is the end goal, failure is how you get there. So I had an entire chat with him, and we got to exchange a couple of really insightful conversations about the entirety of not only the Southeast Asian scene, but how this entire tournament has transpired for VLT. One thing that I do learn from a player like Excali is the fact that in a market like South Asia, right, he truly has a very unique ability to blend his personality into the game, which makes for a very unique byproduct in the form of a very entertaining player to see. And that's something that I truly feel like, you know, will be a very nice storyline for later on in the tournament as we get to see him duke it off against Dean and Bloom. But we do get to see Revenant and God's Reign duke it off in map 2, ladies and gentlemen. God's Reign, their last leg in the Pentapro series as they vie to fight the SCA representatives we have on board, and they have one chance to push it the distance. Revenant Esports starting this pistol with the advantage and taking that Vibor, crucially, a key piece to what could be a disastrous post plant removed from the equation. And Blackhawk in big positioning. No! The White Swing, it betrays him! Word cut down, but Revenant still able to hold it down. It's Ching and Wimp in a matter of succession get consecutive picks, and Wimp he doubles down.
Revenant pick up right where they left off. A crucial pistol right here. Should be able to help one tap guard get his hands. What is this? Oh wow, it's that motivational aspect. Every single round, the claps coming out. Is that 1, 2, 1, 2, 3? Let's go. I can feel the energy. 1, 2, 1, 2, 3. Let's go. R&D. Oh yeah. Let's go, man. This is the stuff we love to see, you know? Like, I'll be honest, even like in the games I play, right? And we play just for fun, right? See, we don't play to compete, to be the best in SEA. You need to keep the same kind of energy. You need to keep the same kind of morale. Beautiful flash, dude. Nitrata just got destroyed by that flash. No cap. One enemy remaining. Talking about getting destroyed, it seems like God's reign in this round will likely be the same, but Hoax actually able to recover his Spectre and pull a crucial one back. One tap God now left very low. He's gonna have to make sure he doesn't peek out. And ensures that Wimp takes first contact, and Wimp doing exactly that, marking the crossing into market, and Hoax walks into his crosshairs. Very curious that I totally expected Hoax to just close the door and try to get the plant, because that would have been a good eco. But hey, I mean, they still did take 3 weapons out of the hands of Revenant. So all things said and done, considering their investment was just what, a shorty and a frenzy, they couldn't have asked for more. They got their fair share. Damn. Surprising that Hoax and I were even able to trade that off. It almost looked done and dusted. Well, nonetheless, look at Revenant's buy now. Is that even considered a buy? Bucky, Ghost, Sheriff, and a little bit of aggression from one tap god to get information. Flash and dash coming out, I really do like it, because in that eco, it gives them the opportunity to take matters into their own hands, but they're just not able to find one. And one tap god now in a very one and done position, still manages to pick one out, and it's crucial because he's setting up the bait for Whip. The crossfire now coming down as Revenant, they make sure they make God's Reign pay in that choke point. Hoax again left all by his lonesome in a 1v2. He's got to make the right decisions. Has no idea where both of them are. He's making sure he checks his flank. With just 35 HP, Hoax with an impossible task. Thankfully for him, OG, he's got the better weaponry. Yeah, and the spike more importantly. The door like a gentleman, but still not in position to make the cross. Again, with such low HP, he really can't be taking unnecessary risks here. However, if he doesn't even out the numbers before the plant, it does make it significantly harder. The utility dumped on top, the door firmly broken, and the wide swing from Cheng with that Bucky. Yeah. Dude, it's like, what, 2 in the afternoon? Cheng really wanting to feel dirty already. Push a button. Say, I'll find you. Oh boy. Once again, Revenant. They've picked up exactly where they left off from Icebox, and you can see God's Reign, they're devastated, not just in their faces, but their economy as well. Forced onto an eco. As it's just now 2 Spectres, a couple of Sheriffs, and a Frenzy to try and pull the impossible off. God's Reign, lost and confused. It's almost like someone's playing Ring-a-Ring-a-Rosy with them, and they're just facing vertigo. They can't go anywhere. They don't understand what's going on. And Revenant, they're absolutely setting up a bulldozer affair. Now with one tap on that operator, does get smoked off, but almost landed the blind shot. Josh is anticipating this kind of an aggressive stance, but the flash was brilliant from Sai. Josh tried his very best to maybe lay down a little utility for the cover. Ching not crunched upon just yet. Vibbo finally emerges to find the trade. However, it's still the numbers even inside. So close! Oh, he finds the ding, but not the kill! No! Blackhawk, he's not able to shrouded step his way to safety. And one tap god left alongside Wimp, but Wimp not close for the support. He has a little bit of utility to work with. The fragment to try and push back Vibor just a teeny bit. And Hoax pushes back Wimp with that recon. Wimp still having a small ability to isolate the frags. However, Vibor more than competent in his 1 versus 1. Finally breaks the streak for God's Reign. Revenant punished. They killed my father. Yeah, and crucial turn no less. That flash, Josh is getting stuck at the very end of that switch.
A little unlucky for sure, but that flash beautifully timed to ensure that he gets put into that position. God's Reign, they pull a crucial one back. The Thrifty will give them a lot of confidence and most importantly, breaks Revenant's economy to remind them that still anything can happen. God's Reign, they just got to take it round by round and persevere. Again, starting off in this default, taking A main control. They've got the Killjoy lockdown to make it work, and with so much free A main control being taken, surely they just leave someone here and then regroup towards that B side because they pulled off the rotations. Look at Revenant, 4-man on this A side. Yeah, they did bait out that swarm grenade as well, so they're definitely paranoid here, Revenant Esports. And they're relying on one-tap God's aggression to find a little bit of information, but not that kind of confirmation. Vibor now with that lockdown, a little bit of an overblow, but again, they don't have the kind of visual aids that we do, right? They do not have the X-ray enabled if you're a little new to Valorant. So they have to take as much precaution as humanly possible. And again, Ching with that chain gun is an absolute demon. Luckily, it's put to bed. Ooh, Josh S, what a tap on a hoax. It makes the situation far more doable for Revenant. Blackhawk has picked up that Odin. It's a problematic thing now. Spam potential huge. They have a little bit of utility to base their attack on as well. That turret and that alarm bot could be used invaluably. But the aggression not spotted. No, Vibor, brilliant punish. And the deny firm from God's Reign. It looked like a little bit of hesitation from the last two players of Revenant in that 2 versus 2 there. Look, again, it's the round by round effort, right? It's about how they're able to translate those ultimates. They made the lockdown count last time around, OG. They've got the null command this time. Ember just one away from that cosmic divide and God's Reign. They just need that one round. Not just to nullify that lead, to bring back the scoreline, but more importantly, bring back their confidence, because I think that's what is lacking. We saw their devastated faces. We saw how much it affected them after that loss in Icebox, but God's Reign, they seem to have reset and they are bouncing back. Look at the presence from Revenant, however. They're relying on utility to take care of A. They're trying to focus towards mid from short. However, with them being smoked off, information is going to be slightly delayed. Revenant are still very much focused towards that B main hit, which is not going to be anytime soon. Blackhawk, he actually finds Hoax in that exposed position. You'd assume he'd be playing with Knight Rider in tandem. Knight Rider needs to enable the tailwind to try and get back to safety. But with Blackhawk around the corner, that's Josh S actually. Is it really safety? Nah, it isn't. Across the board, they start losing fights here, God's Reign. I mean, they kind of want to play this mid-round loose. I think this is what one of the end results of it is. Still though, the opportunity present. Sai with an all command can pull off the impossible. It's all down to Ember in this 1v1. Smells someone out and trying to go through with the white swing. He spots out Josh S and takes him out. 2v2 now on the map. Sai delivers yet another devastating blow, and suddenly Revenant, they have fallen apart. One tap God though with the dream, the updraft coming out. Spots out one, and now Sai left with the bear is the lowest of HPs. But he lives up to his name. He lives up to his dreams. Sai, the smoke criminal, truly comes alive. Gets that crucial clutch to nullify the scoreline. Oh, dude, how does he do this in these lobbies with the damn Vandal? You're supposed to have Tracer Fire on that stuff, and he's low HP. Still finds success. Unbelievable, man. They find the equalizer here, God's Reign. 3-3. They bounce back with a stern reply, not dropping a single round after they found success. And this, alongside one tap God using the Blade Storm in the round prior, will indefinitely make it an easier affair for God's Reign to deal with. So for all they're concerned, they need to try and continue on the road they're on right now. Finally see the signature timeout though for Revenant. It definitely wasn't warranted in the first map. Coming through here, and it's that early timeout that we've seen many a times take beautiful effects. So I think for Revenant now, the idea has to be that potentially maybe even overheating to a certain extent, because that last round at least turned into a brawl affair towards that mid area. It wasn't the classic signature Revenant playing happily back inside, playing off the utility. No,
They were looking to take the fights, and that worked straight into God's Rain's plans. Now, what's the variation they bring here? Again, Revenant will be looking to bring out a little bit of change in the round coming forth, because this is a round where they're investing to do damage economically. But the kind of success God's Reign have been finding, if they win this clinically, it's going to be harder for Revenant to do it on the longer run. So they really are making a smart move here, Revenant. A nicely timed timeout, a nicely timed investment. God's Reign need to show respect where respect's due. Hence, they're taking things very slow. Exactly, and they expect the aggression after the timeout, and they're right in their read, but Revenant, they step back when it's crucial for them, and they're just able to now reset into a different setup. Instead of the A main push between Wimp and one tap God, they've settled into an A short crossfire, playing with that lockdown to retake that A site, and it's gonna work out beautifully because you can see all of God's Reign setting up to hit this A site on that A split, but a crucial 0 point reveals, I think, 3 of them, and now they're gonna have to slow it down. God's Reign know exactly what's up. The Prowler as well to reveal. No, it doesn't check out Knight Rider, but still they're gonna know that this A hit is nigh. Or he has a good idea of Blackhawk's position. The Swarm Grenade is gonna push him back into its market. Wait, what? That's on the that's onto his tree. One tap God actually finds a bullet in the back of his head, and suddenly the defense crumbles. It looked so peaceful right up until that very point. And God's Reign, they do this perfectly, man. They lose only one player in the process. Revenant certainly not the round that they were expecting. All of that presence created towards mid. Vibor goes so far as to push in all the way to market and break the alarm bot to create presence towards mid, and A shot allows Knight Rider to sneak in from A main. Remember that Prowler that Sheng had set up, it didn't check Knight Rider, so Revenant not expecting anyone there. Knight Rider able to sneak his way in and find a crucial double. Set up the lead now for God's Reign. And a crucial one, no less, OG, because this first half, absolutely key. Revenant, and on the back of this timeout, losing out a round, you can see no longer the claps coming out, is instead focus on that screen. To pull this next one out is Wimp, who's going to have to really step up, because without the timeout coming through from the coach, they're going to have to adapt. And I think it's that exact same thing. God's Reign are baiting them into fights towards mids. Revenant just have to hold on. They had the right idea to retake that A side. They just needed to be a little more patient. Time with the guns. We need to see some kind of variation from Revenant Esports, right? We've seen the kind of Revenant Esports that just lays back passive in towards the side, where on the entry really, they though. tried, I mean, at least towards that A side, right? We've seen them deny the entry. It's towards B and mid, at least A short, where they try playing a little aggro. So I think they changed the story there. I think they try playing the aggression maybe through B main, maybe a little more in an unexpected fashion. I don't know, Jay. I think the only round that they played passive, oh wow, Sai really firing them up. The only round they played passive was around that crossfire on that A side, like you mentioned. Yes, yeah. And they shut God's Reign down. The passive hold works beautifully for them, so I don't think there's any need to get aggressive. They can just, it's their signature. They're so damn good at playing that defense on the back foot. They don't need that information, unlike most teams who get really itchy when they don't necessarily have information about what their opponent is trying to do. I think Revenant right now are getting their hands dirty and stepping into God's Reign's playground. God's Reign want them to play a little aggro. They want them to take the fights, and it's working out beautifully for God's Reign. Yeah, what comes to the back of my mind is that B-side defense being somewhat weak, and now that you mentioned that, it kind of does come to my mind that B-side defense, right? Even though it's passive in nature, it doesn't really have the best positions in terms of being able to dodge the utility being dumped on by size KO, and again denying that aggression from the side of one tap. Sorry, not one tap God, but Knight Rider. So I feel like if they switch up that B defense just a TD bit, where it's not the Killjoy being suppressed and the Killjoy being left open and dry, it changes the way that Revenant then has to approach that. And I do see it panning out. However, Knight Rider has been doing a decent job at,
you know, baiting out the utility from time to time by trying to modulate his aggression. So it's a tough cookie to crack, CA, without a doubt. Oh, 100%. And I really like that point you mentioned about how that KO is making life hell for Josh S on that B side. So I wonder if they can actually, in that regard, change that setup up. Play with one tap guard towards B main, where you can then play the Astra Jet towards B main, allow your Killjoy to play A shot, where she still has that trap towards mid, but then is denying A shot altogether. And it works beautifully because they have the lockdown ready, right? So they don't have to actually worry about A site. They can just leave that KO to set up a 0 point early into the round, fake presence, and then instantly go on the rotate just to make sure that the other team doesn't waltz into the A site. So I really think that repositioning of the Killjoy is paramount, but they've got a little bit of break. I'm sure they will be able to use this time to just reset themselves and stall out the momentum that God's Reign may have accumulated. Okay. Seems like we're running into a bit of a technical issue here. We'll figure it Yeah. out real quick. You know, I kind of feel like, especially at these moments, our eyes need to be at one man, and that's Knight Rider, because right But he has now no with the cam. way the past, I mean, yeah, on the server at least at the minimum. So Yeah, the I reason know. I say that is, at this phase of the game, you can see that Revenant are very hungry for answers. If you're able to come up massive in the next 2-3 rounds, that to a majority of the extent breaks the kind of confidence behind the Revenant calls and the Revenant read of the situation. That's when your enemy is at its most vulnerable. You know, that way, if you look at it, Valorant is a sick mental game. Whoever wins the mental warfare usually ends up winning the series. Yeah. And we talked about that in the pre-match lobby too. Sai and Wimp, great friends of the server, but in this particular match in the server, they've become those massive rivals, leading the respective teams, and like you said, engaging in that mental warfare. 5-3 now, we're back into this next round as Revenant will have to go for the eco. God's Reign, once again, in a great position to keep pulling this one off, and Revenant, it looks like they are going to finally change that setup up. Not play Killjoy towards A shot, rather let her play mid. Trying to get a little bit of a glimpse towards this B-side defense. Without any Killjoy utility here, it becomes a little problematic on the whole. What? Although one tap god still finds that with the frenzy at such range. He finds the double. One tap god making this somewhat doable here for Revenant Esports in a round like this. One enemy remaining. Oh no, Blackhawk, he was being set up so well. Hey, at least Wim finds a trade. It's a little consolation though. Ember on 4 HP, him allowing to survive is somewhat criminal. And Hoax, considering he was the high HP player on guard duty, secures the round for God's Reign. But hey, a decent bit of damage done, man, all things said and done. Yeah, still I think Sai calling out their comms potentially in that situation. He's talking a little too fast for me to be perfect with my lip reading, but I did catch a couple of words here and there. And I think the idea is that when he had to turn around where he was in sight, the comms need to come through about whether they're clearing out sight so he can mark defender side spawn at the same time. But hey, it doesn't matter. What matters is that Revenant now, they're facing off against the God's Reign on a roll, so they set up one tap god for success. The aggression paying off as he finds one, and while the trade does come out, Wimp ensures that they've got the man advantage, but still, Ching left in a one and done position. Knight Rider might just abuse, try to catch him out because he's got Wimp, and now Ching to get yet another, he holds it down! One and done, more my God's Reign are done. Oh no, it was crucial for Knight Rider to find momentum as he exited the market. Could not have allowed his teammate to go down the drain there. Yep. Oh, heartbreak of a round. Slowly but surely, God's Reign able to find success in this first half.
that needs to come with modulation. They have the lead here, CA. Even if they lose a round like that, they have ultimates, they have a buy, they can afford it. But it's about how many instances of this can they afford. No, what? How is that not a kill? Ching, close range, and he manages to survive. Blackhawk close on the trade to his short. And has left us to a dead even situation. One tap god without his tailwind, it'll be uncomfortable for him to force the fight from market. So they essentially need to concede here and need to play retake Revenant. Pops the null command a little too early though, and one tap god looking to take the fight. Slows them down. The null command now shut down. God's Reign, they've got the advantage, they've got the side. The revive should be able to come through from Josh S, but I think Ember's expecting it. Here's the audio cue, peeks off of it, and it's all about that bait. The Nano Swarm's now coming through, and Josh S able to successfully bait the revive to trade off one. 1v1, it's Killjoy versus Killjoy. The bigger brain to come alive, and Vibor just says, no brain. I've just got that skill, goes for the white swing, and pops one in Josh's head to shut him down, get that crucial clutch. And it was very crucial that Vibor forces that fight, because the lockdown could have been used against him very easily. Very good on denying Revenant any free rounds here in the first half. And this is what I meant, CA. If these kind of rounds were there on Icebox, it would have been so much of a close affair. Well, this resurgence from God's Reign, especially considering that it's on their attack, gets me all the more excited. The fast play from one tap God, the flash adopts the sky, and he's still able to put it to success. 6 bullets. Okay. What was he trying to do there? Nonetheless, they still find the trades, God's Reign, and they're able to fight this back momentarily. It's all left on a sigh. After a Pandemonium in a round like this from Revenant. And am I tripping, or is one tap God tripping? He's just feeling himself, man. A great play there from Revenant to switch up the pace, acknowledging that they didn't have the greatest of buys, right? And in those situations with the broken buys, it's best to try and catch your opponents up. But hey, God's Reign, like you said, on the attack, there was that resurgence. 7-5, they picked up the lead, and heading on to their defense should look to close this out, but it's easier said than done. Revenant now get to play on the attack, they get to control the pace, dictate the tempo of how these rounds go. And the ping's already coming out, a shot split most likely as Revenant set their sights, and it might work out beautifully. Because look, God's Reign, they've set up purely to deny that A hit, the Nano Storms as well, on door and on site. It's all about denying the site, but Revenant, they're gonna circumvent all of it as they head into Garden and True Tree. I wonder if they're actually gonna switch it up and go for Heaven instead of walking straight into site. Quick split now on fruition. Ember does have a lot of stars placed, so it's possible for them to layer the utility together. However, they're still within the site and they need to play off each other, where one tap god quickly rips this defense apart from the quick push to his gen. And the man advantage on the side of Revenant. They have a little bit of utility to base this post plant off. They have decent positioning as well, both towards main, towards tree, and towards hell. And they're exercising it due diligently as well. This is everything that we wanted to see from Revenant Esports. So Revenant quite low, might catch them out. It's all about the duel he's able to pull off against Shing. Finds one and almost makes it the double. Wimp left with really low HP, but at this point it just won't matter. Knight Rider on his lonesome, spotted out on the flank, and it should be a simple enough round for Revenant to convert. The pistol picked up, that means now with the anti-eco, they will be able to equalize that scoreline. I mean, we expect them to equalize the scoreline, and I have to clarify because we've seen some insane thrifties pulled off. Insane doesn't even captivate the kind of stuff that we've seen, bro. Insanity is what we are experiencing, though, so I wouldn't blame you on using that objective. So, ooh. Yeah. Wait, what? Please tell me this is a technical timeout and not a tactical timeout, because that's sus if this is a tactical timeout. Yeah, actually, Okay, this is hella sus. I see 3 of Revenant's players not moving. Okay, Blackhawk is moving. So, Ching and Josh S not moving. I think it's a technical timeout. We will get the clarification soon enough. So, again, the kind of experience
that first half was, especially for God's Reign, has got to be refreshing, right? Especially in a series like this, it's got to be feeling like a breath of fresh air. It doesn't matter if Knight Rider has 6 kills on the server. In my opinion, I still feel like he was more than enough of a front man for the rest of his team. You know, like Sai, like Vibor, like Hoax. They've gotten a chance to show brilliance due to the sacrifice of Knight Rider on that attack. And this is the chance now for Knight Rider on his road to redemption. You know, you look back at the first half, CA, that Revenant defense really wasn't reliant around one tap God's operator. We didn't really get to see a whole lot of it. But with Knight Rider, it's a completely different story. This man on the operator, he is able to carry the weight that few Titans can. So, if there's one man on God's Reign who really needs to turn a new leaf on the second half, it has to be Knight Rider. Oh, 100%. Hasn't had the greatest of halves, but can redeem himself as soon as he gets his hands on an operator. But right now, the focus on this particular round, it is that eco situation, and Knight Rider, the sole one with some investment, will not get any dice. Josh, yes, with the lineup, able to pick one up. Vibor holds down the side, finds 2 crucial picks with that right click. It's a round of that killjoy, though, that Josh is able to get a couple more back, and Ching will ensure that they're able to pick off the side. Ching to finish this off, and despite Vibor's heroics, it's a decent anti-eco, just a couple of weapons lost. Equalizer soon forced. God's Reign, they'll have the weaponry, so they need to be diligent in choosing their fights. On a map like Ascensia, especially towards that A side, it's so easy to close the distance, right? So having that killjoy towards that A side is gonna be very valuable. Although what's gonna be of more value is if the killjoy, especially, I mean, that being Vibor, is able to dodge the 0 point. Wimp needs to be on point here. If his team is not to be denied entry off this A site. Hold on, no. Because you've got Revenant trying to pick up the pace on their bonus once again. Vibor, the anchor on this east side, delivers with a double, but Revenant, they're still able to get the site, and that's what is crucial, because Wimp now, through the shadows, he's able to spot out Knight Rider, and while Revenant, they may be stuck, Blackhawk should be able to get out soon enough. The backup coming from his team, the flash to break out that crossfire, but Blackhawk still can't move. No shrouded step, no smoke to get himself out. Revenant in a bad position, but Blackhawk, he just decides to finally hightail as his smoke comes back online. The plant will go down, OG, and 3v3 in a bonus. Looks like a decent round already. Ching, it's crucial that he stays alive from that position. Blackhawk given away by the recon, but he's behind somewhat hard cover, so he can't be spammed down just yet. The possibility of a reposition and Wimp being on such decent HP allows Revenants to still have a leg in the negotiation for this round. Wimp, he's gonna play around the cover. Close range, he sprays them down! Merciless! They head out the door straight to their coffins and straight to spawn to next round. Revenant Esports, brilliantly executed, brilliantly done. Despite Vibor's heroic efforts towards the site, it just doesn't feel like God's Reign are gonna get a break on this defense. I think God's Reign just hesitating too much. When they commit so much utility to keeping Blackhawk in that switch position, the Astral stun committed, the flash coming through as well from the KO, they've just got to go in that moment to try and fight. But when they let Blackhawk get the plant, when they let Revenant reposition, they have no utility to actually go for the retake. They walk in straight into Wimp's crosshairs, and he's able to pick up an easy quadra. Now get his null command online. God's Reign with that slight bit of hesitation, the second guessing, making them pay a devastating price. But now having lost their bonus, they're gonna have to play on that eco once again. We saw them pull it off once in the first half, but it's unlikely that they're gonna do it again. Whoa! Disgusting shot, man. Ember is known for such sheriff shots, so better be careful. Vibor has a very good off angle to the cosmic dimension. Vibor with the double and the hold again, looking relatively well for God's Reign at the moment. They cannot afford to give away even a single individual pick.
Revenant Esports known from clawing back from these kind of deficits. So Knight Rider with a very, very well-timed flank to seal the deal shut. The dink from main. What? And Knight Rider seals this round in security. It almost felt like yet again Vibor's heroics was not gonna be enough. Almost. I'm just flabbergasted. This is the second time in this map where God's Reign lose the bonus and then pull out the thrifty immediately after. I'm so confused. They're like, we want worse weaponry? Huh? How? It's like, I want to... I hate it and I love it at the same time. It's like that song. I hate you. I just can't help it. How do they pull these thrifties off? A crucial one though, they're able to nullify the score line, and now both teams with equal weapons online. We finally see Knight Rider getting that big daddy weapon. He's got his op in his hands, pulled out that first pick. They're actually deciding to play on this side. The Killjoy ulti gonna detain every single one of them. They've got to play aggressive and find the picks. Oh no, but they all get locked down. Yeah. That was so well orchestrated from Revenant Esports, although still possible for Vibor at the clutch, as lockdown still present in his shoulders. And a large responsibility as well. We're still opting for the gunfights, 28 HP. He's almost a dead man at this point. And the peek from Ching to his lane and the quad kill of his own confirms a round like this. They just layer utility upon utility upon utility. They knew that if they do not throw bodies and just bite that time towards the B side, if they just hold from boat and market, it would have been such an easy run for them to pull off. And well, God's Reign were hoping for such a fight. You can see the position of Knight Rider, you can see the position of Sai. They were hoping for the peak, just nothing offered to them whatsoever. Here. Exactly right. I'm just surprised they all sit on site with that lockdown, maybe expecting Sai to break it with his fragment. I'm guessing he feared his lineup, I'm not exactly sure, but hey, a crucial round no less, and with that lockdown paying dividends, Revenant, they switch up their sides looking for the mid to be hit. Knight Rider gets caught out, Ching picks off yet another, and now the mid to be hit coming into fruition. It's all down to Hawks to be the hunter and push them back, but the backup coming through. Vibor truly been a menace in this defense, but not enough, man. It's always decent, but not enough for God's Reign. Again, why the hesitation with the lockdown in a round like this? It was so doable. Now Hawks had a massive handicap in this 1 versus 2. Revenant, they managed to rendezvous, they managed to recompose, they managed to reset themselves here towards this A site. Close the door, and Josh S with wide open plant. If Hawks was maybe moments earlier on the rotation, would have been able to get a frag for free, and he still finds himself the 1 versus 1. A very doable ask. The drone to add information. That tag gives the confirmation. Hawks with the shock dart setting up for the reposition. Is he able to find this though, as he's in a position of disposition? 60 HP. Josh S playing time brilliantly, not giving away the fight for free. And Hawks denied a chance of brilliance and a clutch. God's Reign giving away double digits to Revenant. Mind you, ladies and gentlemen, if you're joining us right now, this is map 2, God's Reign, fighting with every inch of their strat book to keep themselves in the Penta Pro series, but it continues to elude them. Man, I feel truly bad for Vibor. Every single round he's able to make his impact felt, but they're just not able to translate. It's come so much so to the fact that like it's truly become that Killjoy fear that Revenant are feeling. They're able to avoid him to a large extent though, and now God's Reign with this timeout. I think big strategically to discuss, just I think more awareness of how Revenant are likely to play based on those ultimates. The lockdown hit should have been expected towards the B side. This mid to be hit, something we've seen Revenant done before, right on the back of a lockdown round before. So coming into this next round, I think what Revenant are likely to do is play on the default. They're going to expect aggression from God's Reign on the back of this timeout. So if Sai can play the right mind games, God's Reign just need to play discipline. They don't need aggression here because Revenant are sure to pick them off.
And again, look at Revenant's positioning, right? They're expecting a little bit of aggro towards A main, and they're accounting for it in a very passive Black Hawk, who's all the way at attacker spawn. They will contest for mid control, however, which I feel like is very crucial. Because I think mid is the only leeway where God's Reign find information, right? They don't want to play aggressive towards either main. So you try denying an avenue like that, it puts a lot of pressure on this defense to make the wrong call at the worst possible time. The ways though. Revenant happy to play it slow in the initial phases of this round. They know it's the eco, a broken buy of sorts for God's Reign. And especially after that timeout, they're expecting some sort of proactive play. This is where the mind games are key. God's Reign, they don't move an inch. They don't make that play. Instead, they're waiting for Revenant to regroup and fight against that clock. Doing exactly that. Now Hook spotted out. He's going to have to back off. But a lot of utility baited out there. And that means Hawks will get an easier side to play. Revenant slowly grouping up now towards this B site. Mind you, backup is far from removed from this equation. He's gotten suppressed. He soon shall face the wrath of Revenant. Knight Rider trying to reply again. I think he shall whim through the smoke there. Hoax needs to buy as much time as humanly possible, but is not able to base his defense whatsoever. He takes one tap guard down low, but that's not a dead one tap. So it's still a viable threat. And considering that Vibor has the lockdown, Revenant yet again need to play this post plan aggressively, hence they're forcing such uncomfortable fights. Cosrain has the opportunity here, mind you. With that backstab Vibor, no, transition, that was their hope, and he still clings on to it. Has the ability now to pull out the lockdown, but he gets denied, and Blackhawk alongside Josh has clutched the round out. It's 11 on the board. Revenant so close to showing God's Reign the door. Oh boy, fate is a cruel, cruel mistress where the run and gun worked out beautifully for Vibor down B main. As soon as he tries that into sight, gets instantly pulled up by Blackhawk and Revenant. They pick up the round. This may as well be match point because God's Reign, they've got one final buy in their banks. Their ultimates as well, all ready to play. You got the lockdown, the Hunter's Theory, the Null Command, as well as the Cosmic Divide. Do or die, God's Reign fighting for their lives in this tournament, fighting for a chance in the main event, but Revenant, they've decided to pick up the pace. It's all a fake though. It's all a fake. They push in towards this B side because they've got from the shadows. Look at the spike. One tap God just looking to kill so he can bait out the rotations while they all walk into the A side. He actually does. Revenant, he gets the sight, he gets the lockdown as well, and they suddenly have to change their plans. They're like, wait, we didn't expect to get the B side, but all right, we'll reposition. He will be able to get the plot. And this is such a weird round. I mean, it's a weird round considering that you usually account for one tap God dying, right? Considering that God's Reign had the information as well, they knew that the defense is very split and they're playing retake towards B, so very viable for them to do so. And now with this lockdown, what they've been playing so aggressively in the past few rounds for, they now have to face its wrath. Ching still does good in delivering a kill, and they're slowly but surely doing it here. He's gonna be detained, however. And the round confirmed now for God's Reign, almost confirmed. I mean, there's still a very, very small chance. Side though closes it out. I was wondering, why is nobody going for that kill? Why are they leaving it open? But hey, God's Reign finally get a chance to exercise their ultimates, and you can see of what avail it is, right? Yeah, but this is something that Vibor could have done a couple of rounds ago as well. They're at least able to pull off a round. Still, I'd say Revenant, they won't necessarily be sad about losing this round because on the back of one from the shadows, they baited out that lockdown, they baited out the Null Command, and now they've got the Nightfall and lockdown of their own. And while, yes, it does give God's Reign an avenue back into this map, with the Bladestorm online, Revenant know that they can easily penetrate their way into this B site. The 0 point though does slow them down, and now Revenant will just have to wait. The lockdown ready, but so is Sai with his fragment. Revenant, they're gonna have to play this smart. Oh, they might fake with the lockdown. Yeah, and you can see the kind of change that it's put in the defense of God's Reign, right? They're very, very, very passive.
They're relying on that crossfire towards mid to pan out, so they can be a little flexible towards that market B site's presence. And with a lot of utility towards this A site, it could very well be Reckoning walking into a trap. However, they think the better of it, and One Tap God really wants to force the fight towards mid. Ember ends up going down, and a huge problem now on the hands of God's Reign. No more smokes for the retake, less utility to base off individual play, but they at least thin out the numbers. The numbers advantage swaying the other way, and Josh with the close position able to find the frag on a Knight Rider. He has the lockdown, he has the ability to get better positioning, and he's exercising all his options brilliantly. Hoax putting a little bit of pressure. The second shock dart should be the kill. No, he survives a 1 HP Josh S. Unbelievable. And it's all down to Blackhawk to save his comrade, to get him out of that position, and Blackhawk using the shortest step to get into sight. Hawk's now in an impossible spot. Shuts down the 1 HP player, but gets instantly traded out. That's a worthwhile trade. Blackhawk now with the plant, but he's been spotted out. And the spam for Vibor to secure the round. Crucially so, because that looked like a desperate spray. Might had not worked out. Would have been devastating for Vibor able to get it in the bag. Will it also be able to secure the op? So a win in every single front for God's Reign, because they bait out the ultimates as well. The Nightfall taken away. Nightfall taken away. The momentum taken away. The equalizer soon to be on the cards. But the one bit of hesitation that I have in the back of my mind, CA, is the fact that throughout this best of 3, the operator has never helped God's Reign. Even though it's, you know, one of their signature moves, you know, the double operator. It's not been a saving grace for them here. 100%. And we talked about this, OG. How, despite the stomp in the first map, we expect this map to be much closer. Both of the teams a lot more comfortable, and God's Reign fighting back with that last round. They've broken Revenant's economy. Should be able to comfortably secure once again the 11-11 equalization of the scoreline, and they do exactly that. But can they do it in flawless fashion? The answer is a resounding yes. 11-11 on the board, and God's Reign once again in control. How is this happening, CA? Out of nowhere, this comeback from God's Reign. Revenant? At least their faces, it feels like they're a little puzzled. I think both of us know here that now Revenant's options are limited. They have to play on the back of utility. Even if they do use that lockdown, it needs to be very well alongside ऐसी बेटा में मैच देखता है घंटा ला रहा है and Hawks anticipating it is playing very, very far back towards खाना नहीं इसके बाद With an command used though to make sure that the fragment can't come out, but immediately the Hunter's Fury from all the way back in defender side spawn to destroy that lockdown allows Ember to stay on site to play the secret agent and to deny Ember now. Play across the shadows, finds the spike. Might find yet another. The gravity well to buy him some time in the backup now coming through as God's Reign. They look for match point. Ember with the triple will be the anchor as God's Reign boil it down to a 1v4. Josh S now with an impossible task, with nowhere to go, nowhere to hide, and nowhere to look. It's time to bring God's Reign's dreams back alive, and you can see just how much that means to them. I hope this momentary breath of relief doesn't end up removing them from the pressure of the equation. Mind you, it's God's Reign who are very much at risk to get out of this tournament earlier, because Revenant already won map 1. So undoubtedly God's Reign do have the more pressure here. You have map point. What's the reply from Revenant? They have a very, very passive Josh S waiting outside B main, while the rest of Revenant try and focus their efforts in towards that A side. It's all about the look. It's something that Josh S had lots of success with in Icebox, and they're trying to make it happen once again, but it's easier said than done. Because with that Odin going brrr, God's Reign happy to leave the Hunters. Solo anchor towards that B side, and heavy stack towards the A. Sai has got the read, and his read might just come alive.
Because Revenant, they're heading straight into the stack with that Killjoy utility. He's set up to be a grinder, man. It might just be a massacre. Oh, they all are suppressed. Dead giveaway. 50 seconds. The time is gonna be crucial if Revenant want to try and pull this one out of the bag. At this point, I think they need to try and exercise Josh S's position to maybe sell 1 or 2 rotations. But it's gonna be hard. The knife OG, I think it only got Blackhawk out, so Godsrain might not know that this is actually going to be a full hit. Josh is now Blackhawk is coming through on actually market. rotated, As soon as he makes the alarm bot, he's sure to cause at least 1 rotation. But no, actually they just choose. We're gonna play deep on site. Astras over towards B. Still a triple stack on this A side. It's all down to Knight Rider with the Blaze Storm to make something happen. But no, it's his mirror. One tap got to find. One Josh's has come through on the lurk, and it's all falling apart. Spike planted. Knight Rider so close with that operator. A lot of pressure on this man to try and deliver the closure. And he gets the shot on Josh S. The front foot in the retake they needed to get this map done and dusted with. Blackhawk close range with the Spectre can absolutely shred. But he needs to be accounted for. They have Hoax right around the corner. And Knight Rider swapping weaponry. He has the blades available as well. The close range swing. Knight Rider prioritizing the fight. Gets the triple. And it's all on Ember. 1 versus 2 to close this map right here, right now. He's been a beast so far. Ember sets them a scorch with the blaze as he continues to fume on the server. But is this gonna be enough? No, it isn't. We go the distance. Switching sides. God, Overtime. how many times has Ember been in that position in a 1v8 situation with such high pressure? क्या हुआ? क्लच निकाला, स्पाइक फट गया. Pressure on him. एक कितना सेकंड में? टाइम दिखाया नहीं इन्होंने. And then to try and backstab into his heaven, Knight Rider did everything he could in the position that he was put on. Completely not. And mind you, walking into today's matchup, you'd assume that God's Reign, with the kind of narrative we set, would have been much more of a closer matchup. And Revenant proving us firmly wrong. Merity, that Revenant timeout called out. I think at this point it's less strategical and more motivational. Maybe we'll see some of those claps because they certainly need the motivation to clap them in game. And that's nice though. Clap in game, clap out of game. Clap in game, clap out of game. I mean, at this point, Knight Rider, we expected so much of him, but it's Vibor stepping up to the plate. Massively. He's been an influential member in God's Reign to turn around key rounds. Of course, it's a delight to see Ember performing the way he is, especially on this defense duty. Technical pause just to help us all calm down. To ensure that the adrenaline rush after that last round, which looked like we might just would have been headed into bind, just didn't happen. After that, if Gozrain lose OG, that's going to be such a big heartbreak for him. He had such a great map, 21, 18, 13 on the Astra. I think it's his best agent. You know, I just hope that one of the players didn't break their keyboard or, you know, break their chair. Well, they almost thought that they won this. Oh, goodness Christ. Only God knows what would have happened. But hey, I think, it was day 5 where we had a similar scene
with technical pauses plaguing overtime, does cause a lot of problems, especially considering you need to be at your A game, right? You need to win both rounds if you have to win out in OT. It's all about how they're able to push it all the way back. And we talked about one thing that I'm seeing, which is the operator for one tap god didn't come through in the regulation rounds much in their defensive half, but now, you know what time he decided to pull out a glass cannon op. One tap god mocking Love mid it. lane, while Wimp on the back of a 0 point is able to take up a crucial position down wine. Can he squeeze them like grapes though, God's Reign, because they're moving into this A side. The 4-man blind and the fragment to make sure they're all stuck. Wimp with the spam gets a crucial double. That astral pull was so big, so brilliant. Oh no. Spike down A. Rain. Seems that it might have come. One enemy remaining. At bare minimum cost to an end. That fragment, that play. Ay ay ay. Switching sides. Not the way that it was supposed to end. Beautifully done on this setup, man. The 4-man paranoia from Blackhawk truly puts fear into their hearts, and then the fragment to ensure they can't go away. Wimp knows that they're going to try to cross over and just beautifully control on that spam to pick up a double. And now Revenant, against all odds, against the run of play, they picked up match point, and they're going to look to pick up the pace. A fast they hit on the cards here, OG, as Revenant look to take this side. Nooooo board to hold it down. It's just Ember on his lonesome for our match point and potentially series point. Finals point round is going to be a 5v5 retake. Spike planted. Not an impossible one for the like of God's Reign. They have utility, they have weaponry, they have everything in position to clinically retake this A site. Positions from Revenant are pretty decent. Nobody looking towards door, however. Ember finds the opener. Quick trade from one tap god. They now breach their way from heaven and rain down all hell on one tap, who's just dancing in hell with a shorty. Oh, what a jump! Hoax finds the opening, finds the hope. Ching not able to hold on though, and Josh S trying his very best to survive. He finds a monstrous clutch. Revenant send god with a shorty away from. What a jump! Hoax finds the opening, finds the hope. Ching not able to hold on though, and Josh S trying his very best to survive. He